Good evening, sir. Good evening, everyone. And we'll do a small recap what we did yesterday. So basically, we went through big data fundamentals first, and we found that big data is normally comprising of different V's. Let me open my document. So we understood the definition of big data, which is data that is large and complex. And normally such data sets are very difficult to process on a single machines. So certainly we need some different mechanism, different layer to process such large data sets. And the ultimate goal of big data is what normally we use data for analysis. So we can analyze the data, get into the insight of the data and get a lot of valuable information. But data can be of different forms, different, you can say, structures. So normally data can have multiple characteristics. So if any one of the V's is applicable to the data, that data can be called big data. So if the data is very huge, that certainly is big data. But if your data is not big, but it may have a lot of varieties, that data is also called big data. So if somebody gives you millions of files, but those files are very small, but they are all coming from different sources, different forms and different structures, then again that data can be termed as big data just because it has a variety. And velocity stands for streaming data. So we'll discuss that much later. And veracity means any data which is not clean, which is not coming from a reliable source. So we need to make sure that your data becomes clean first, and then we can use it in our application. And then what next? After this, we do big data analytics. So we simply push all the data into some big data platform. And that platform we are using as of now is a Hadoop platform. So we'll be pushing all that data into Hadoop system. And Hadoop system has one important layer called HDFS. So it has a layer of HDFS, which is your distributed file system. And that file system is very important because it distributes your data on the cluster. So this is a component which is responsible for distributing data. So client may be uploading data on the cluster, but it's HDFS responsibility to distribute the data and keep data on multiple nodes. Sir, your screen is not shared. If you have screen, share the screen. Still not shared. Yes, sir. Okay, यार अभी बता रहे हो. हमको लगा कि आप कुछ रिवीजन करा रहे हो. नहीं. स्क्रीन शेयर नहीं किया इसलिए. मेरा स्क्रीन तो पहले से शेयर होना चाहिए. चलो ठीक है, no issues. Okay. So yesterday we discussed about all these things, different volumes, variety, velocity, veracity. And we understood the definition of big data first. Data should be large and complex. And your data should be, cannot be processed on a single machine. And the objective of data is to process your data and get some valuable insight. And then what do? We find the characteristics of big data, which is volume, variety, velocity, veracity. Volume means any data which is very huge in nature, in size, volume. So if you have any such data sets and there is no variety, then also it is called a big data set. Variety means any data which is not having any volume, but it is coming from different sources. So it may have structured, unstructured data. That data is also called big data. Velocity means any streaming data we speak about, real-time streaming data. So for that, we have different applications. So right now, I'm not touching that. We'll be using Spark for that for real-time. But veracity means any data which is not clean or which is not certain. So we cannot just use that data at the go. We have to first make it clean. We have to do first data cleansing, and then we can use that data. So once we collect data into our system or we target our data, what is the ultimate goal? We need to analyze the data. So when you analyze big data, that concept is called big data analytics. So in big data analytics, we have to first take data into some layer
into Hadoop system, where we are able to process the data and make some data in a usable format for your analytical tools. So your analytical tools could be machine learning, your BI tools, your SAS, your R programming. So there are different analytical tools which are available, but they require data in a particular format. And they require data to be in a smaller format. You cannot give them terabytes of data. So data has to be in a tabular format for them. So whatever conversion we are doing at the level of these platforms. So these platforms are called big data platform, and they are responsible for transforming your data. So one of them is Hadoop, and the other one is Spark. So we spoke about Hadoop yesterday first, understood what is Hadoop. Hadoop is actually an ecosystem. So let's see the ecosystem first. In the ecosystem, there are many components. And the main component which is responsible for distributing the data and storing it in the cluster is called HDFS. So we started learning yesterday what is HDFS, how the files are getting distributed on your cluster, and what is cluster made up of. So let's revisit HDFS once again. So HDFS is a master slave architecture. The master node is called NameNode. So what are we storing on NameNode? Can you tell me? Data logs. Data logs. Metadata. Metadata ना. NameNode पे हम लोग क्या सेव करते हैं? Metadata. So we are saving metadata on the NameNode. And where is our actual data stored? DataNodes. So your actual data is stored on DataNodes. Suppose I have a file of 100 GB. So what is the process? Tell me, how the file is going to get uploaded on the cluster? File will be split into small chunks of Distribution. 128 MB. So that property name is called block size. So block size is value currently is 128 MB. You can change the number if you want. You can configure it. That is not a problem. So you'll be splitting your data 100 GB divided by 128 MB. So this will create almost like, we create for 80 files, we'll be creating 800 files. Or 800 blocks, we call them blocks. So these blocks or these files need to be written on your data nodes, but we do not know where it is to be written. So client has to go to NameNode. NameNode will figure out, because NameNode manages every data node. It exactly knows how much data we are having on every data node. So to keep the balance of the cluster, it will come up with the block ID and block name. So unique ID will be given and unique block name, that is file name, will be given to each file. And they will start with the word BLK and underscore and whatever ID. So you have ID 100, 200, 300. So each file name will get a unique number, and then client starts writing to these nodes one by one. So depending upon how many nodes you have, how many files are to be written, they are equally distributed on all these nodes. Now, yesterday we also saw that if your node fails, if after writing or maybe at the time of writing, if any node fails, then what happens? Replications. So we are basically replicating every file or every block 2 more times. So the total replica is 3. We call it 3, RF3, that is default value. It's not 1 plus 3, it's 1 plus 2. So how does it look like? It looks like this. So you have a couple of files written on your NameNode file system. So a cluster, your file system will be written on NameNode. All the directories and everything will be created on the NameNode. And there you will be generating
the block ID. So here in this case, you can see there are two files. One file does not have extension, the other one has extension. So one file is having 2 blocks, the other one have 3 blocks, and all of them are replicated 3 times on multiple nodes. So here we are replicating every file total 3 times. So basically we are consuming 3 times the space. Now some can argue that is it not costly to store 3 times the data? So we can argue that in spite of storing 3 times, Hadoop cost of running data or processing data is very low compared to your standard database system like Oracle. In Oracle, the servers are very expensive. Here the servers are very low cost. They are commercial, or they are, you can say, not very expensive servers. And plus the software, the hardware, the software which you are using for Hadoop, it is not so expensive. It is almost like open source. And nowadays we have a lot of distribution companies, you can buy from them, but they do not charge like, as equal to Oracle database. So the cost of running the application on your Hadoop system is very, very low, in spite of storing 3 times the data. That is why the argument is that we say in Hadoop, writing is cheap, reading is expensive. So writing is cheap means it is not very expensive to write data on the cluster. Why reading is expensive? Because we cannot spend a lot of time in extracting data. Nowadays, time is important. So if we can process data faster, then what do you want? That is what we are looking for. How to get your job done faster. Nowadays, time is more important. If you can get information on time, that is really going to help you a lot in business. So that is the key to understand. That is why don't worry about the cost of storing data 3 times. And yesterday we also understood that we are communicating with these blocks or with these NameNode, DataNode through heartbeat signals. And if any node fails, then that node has to be replicated on other nodes, immediately all the blocks, and you need to maintain the complete replication factor. Now taking this forward today, I have a question for all of you. We have 3 replica factor, right? Now let us assume that all these 3 machines were kept in one location, and that location failed. Maybe it's some earthquake or some natural calamity took place. That entire location has something wrong went there. What will happen to your data? It will all be The lost. data will It will get Lost forfeited. All data is lost, right? So what is the solution? The, Should be keep restored to in the different another location. Backup. keep those 3 which we have made, each should be in a different region. Not each, at least one. At least. At least one should be in a different location. And now you understand why we are using RF3, because otherwise 2 copies would have been good enough for replica. So the 3rd copy basically is a DR copy, disaster recovery copy. Because if I keep all the 3 copies on a different location, if something goes wrong to one node, for every 2nd copy I have to travel a lot. So that will consume much time. So only the 3rd copy I'll be keeping in a different location. If both the copies fail together, then at least we have one more copy to replicate and to refer to. This concept is called rack awareness. So ideally you should be placing your nodes not in one basket, not in one location. They should be in at least minimum 2 different locations. And that is called rack awareness here. So we have multiple racks here. And let us see the one block, A block, 2 copies on the same location. Easily I could have kept my 3rd copy here.
in DN3, but no. I'm maintaining my third copy in a different rack on a different node. So if something goes wrong to this location, entire rack will fail. All the nodes in that rack would be unavailable. But still I've got one extra copy to refer and create the replica. So I can replicate this file again 2 more times. So I can recover my data immediately because my one copy was available on a different location. So understand the depth of the fault tolerance Hadoop is maintaining, because it is a practical problem. If you keep all your nodes in one location and something goes wrong, then how will you tackle that? So to that, they have found this, they have this solution that they keep always one copy in a different location. So this is done automatically. You don't have to write any code for that. Whenever you're uploading file, and if you have multi-location system, if you have only one location, then nothing can be done. But if you have multi-location system, so one copy will go to a different location automatically on a different node. So thereby you are saving at least your data on that node easily. Is this clear, everyone? Rack awareness? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let's move to write and read process once again, though we had covered write yesterday. But I want to, yeah, tell me. I wonder, after those 2 copies are destroyed, the third copy remains, right? So does that third copy again replicate into 2 more copies? Yes, yesterday we told now it has to maintain the replica factor. Achha, so, okay. So immediately the third, see, this copy will create 2 more copies immediately. Because you have lost these 2 copies, right? Yes. So this Yes, sir. copy will be recreated by, because of this, it can replicate here and it can replicate here 1. Okay. So 2 copies will be on the same rack, 1 copy can be on a different rack. So same principle will be applied here, rack awareness. Same principle will be applied here. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So now let's look at the file write, how actually the file is written to the cluster. Yesterday we did touch upon something that we are first splitting the data. So let's take it once again. Suppose I have got a file abc.txt, which is 200 MB. So tell me how many files I need to write on my cluster total. 2. 2. 2 or 6? So how many? 2 into 3 na? replica के साथ 128 plus 72 into 3 na? 6. Yes, sir. Total 6 files to be written. Yes, sir. We need to write total 6 files. So we need 6 IP addresses from the name node. We need total 6 IP addresses. Suppose there was 1 more data node here or 3 more data nodes. So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, and this is 6. And we had this file name A and B, suppose block A and block B. So we need 3 addresses for A and 3 addresses for B. So what NameNode can do, it can provide A like this, A 1, 4 and 5. And B could be 2, 3 and 6. So it has given 6 addresses here for writing the 6 files on 6 different nodes, because we have 6 nodes here. So this data will be given to the client. Now client will only write the first part of the block, like A and B, only 1 file each. It will not write all the 6 files. So it will write the file which is very closer to the
client machine. So in this case, it is going to write 1 and 2. So A will be written to A 1 here and B will be written here. Client will not create all those 3 replicas for each block. It is only going to write only one single copy, the first copy. And you know very well, yesterday we discussed DataNode are responsible for replicating the blocks. So the pipeline will be created. This block will be replicated here on 3, on 3, and 3 will be replicated to 6. So that is a job of internally DataNodes to replicate and manage the replica. So instruction will be given, that is there, but DataNode client will only write the first copy. Similarly, A will write to 4 and then 4 will be written to 5. Imagine you are writing 1 TB data, create 8,192 files into 3. So 24,000 files to be written. Imagine if client starts writing 24,000 files for 1 TB, how much time it's going to take. So the job of replication is done by the DataNodes. Client will only write the first copy and give the instruction for the remaining replication to be done by DataNode themselves. Just like we did yesterday when we lost a DataNode. So NameNode gave the instruction to the existing DataNode to create the replica. Huh? Guys, just give me a second. Very urgent call. Yeah, you were asking me something. Tell me. Sir, here why we distribute 200 MB into 128 plus 72 MBs? Yesterday was not there in the class. Yes, sir, I was there, but See, let me repeat. This is the block size property, right? 128 MB. which is fixed. Which is not fixed, but it is industry standard. You can change that number, but you can configure it. Nothing is fixed in Hadoop. You can configure it. अगर आपने इसको 100 कर दिया तो 100 follow करेगा system. अगर 150 कर दिया तो 150 follow करेगा. Whatever you give the number, so default is 128. You can change that number. Even replication factor 3 is not permanent. That is 3, right? Suppose आपने system में 4 कर दिया तो आपको 4 copy बनेगी हमेशा. 4 copies will be created. So whatever number you give in configuration, that will be followed by the system. But you have to start with a default value, right? You cannot start with 0. Yes, sir. So default value is 128 for block size and 3 for replication factor. So now when I'm uploading my data on cluster, 200 MB ka file, I will not write 200 MB on one machine, right? Then what is the use of using Hadoop? Hadoop is what? Distributed file system. D stands for what? Distribution of data. Why are we distributing data? Why are we doing all this hard work? Tell me. To avoid single point To failure. get to faster result. Faster processing, sir. Faster processing. That is the main objective. Fault tolerance, so ठीक है, that is secondary, but the prime goal is faster process करके देना data को. अगर 1 terabyte एक machine पे process करूँगा तो I will take lot of time. Yesterday we understood, we took almost 13 days. If I process this data on 500 nodes, I can process in 40 minutes. So 13 days and 48 minutes. Certainly you can understand which one is faster. 40 minutes is much faster than 13 days getting the output. That is a prime goal. And for that, we have to split the data and distribute the data. So at the time of processing, what is happening? We are processing 128 MB as a single file and 72 MB as a single file. So दो program चलेंगे parallelly. एक program 128 MB process करेगा, दूसरा program 72 MB process करेगा.
instead of processing one file of 200 MB, we are going to process 2 files parallelly. And that is why we will be able to process data faster. And 128 MB is not a very big data, right? So that is industry standard. पहले 64 MB होता था आज से 4-5 साल पहले. But now they've increased to 128 because of good quality hardware, good chips. If you have good quality machine, you can make it 256 MB. Now nobody stops you. You have to judge how much time are you taking for processing one block. If that time is okay with you, you can increase the block size. Nobody stops us. Sir, Yeah, tell me. suppose we have a file size of 130 MB. So one file we will be matched with 120 MB. Another file will only contain 2 MBs. What will happen to remaining MB? नहीं 130 को हमने अपलोड किया तो 2 फाइल बनेंगी 128 and 2 MB, right? Yes, sir. तो रिमेनिंग का मतलब समझा नहीं. What is remaining? So मतलब दूसरी फाइल भी 128 MB की बनेगी या 2 MB की बनेगी? 2 MB की बनेगी ना. 128 की क्यों बनेगी जब उसमें डेटा ही 2 MB है. फाइल है नहीं है, कोई परमानेंट ब्लॉक साइज नहीं है, कोई परमानेंट खांचा नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है. इट इज अ फाइल. आपके विंडोज में फाइल छोटी बड़ी नहीं होती है क्या? होती है ना. Yes, sir. हाँ तो बस फाइल होती है. भले वो 10 MB की हो, 10 KB की हो, 1 KB की हो, 1 GB की हो, फाइल तो फाइल होती है. Okay, sir. बट उसका अपर लिमिट 128 कभी क्रॉस नहीं करेगा. दैट इज द रूल. 128 से बड़ी कोई फाइल नहीं मिलेगी आपको पूरे क्लस्टर में. Because that is my upper limit. It is not going to cross any file which is not going to cross 128 MB. So all files will be either equal to 128 या तो उससे कम होंगी. But 128 कोई भी क्रॉस नहीं करेगी. Is that point clear, everyone? That no file will be bigger than 128 MB. Yes, sir. Yes, sir. Yes. That point should be very, very clear because each file will be either equal to 128 or less than 128 because that is my block size property. तो 128 से ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी हालत में. हाँ अगर ब्लॉक साइज चेंज कर दोगे तो होगी. बट ब्लॉक साइज अगर आपका 128 ही है तो 128 से एक एक्स्ट्रा बाइट भी नहीं होगा. फॉरगेट द 1 MB. मतलब पहले 64 थी अब 128 कर दी स्टैंडर्ड के हिसाब से. ओके. बट कोई भी फाइल अगर आप सिस्टम में अपलोड करेंगे वो स्प्लिट होने के बाद 128 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती है. एक एक्स्ट्रा बाइट भी नहीं होगा उसमें. कॉमा भी नहीं आएगा. ओके सर. इट्स अ प्योर फिजिकल स्प्लिट. प्योर फिजिकल स्प्लिट. फिजिकली जैसे किसी को स्प्लिट करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड प्योर फिजिकल स्प्लिट. इट्स अ प्योर फिजिकल. ये लॉजिकल स्प्लिट नहीं है, फिजिकल स्प्लिट है. और बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी आर एबल टू अपलोड एनी टाइप ऑफ डेटा, whether it is image file or video or audio or text or CSV or database. Yeah, tell me. वो जो instead of 200 MB we take 500 MB, then what will happen? We create 128 GB into 3 files. 500 का MB का ब्रेकअप बताओ. 128 into 3. 128 128 128 कितना हो गया ये? 384. Remaining 116. हाँ बराबर है. 4 फाइल्स बनेंगी. You're right. 4 ब्लॉक्स बनेंगे. परफेक्ट. सिंगल डेटा नोड में 4 फाइल्स क्रिएट हो गए. सिंगल में नहीं, वो डिपेंड करता है आपका क्लस्टर कितना बड़ा है. अगर एक ही नोड है डेटा नोड तो चारों एक ही में जाएंगे. अगर आपके पास 10 डेटा नोड है तो फिर एक एक सब में जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली. एक में क्यों रखेंगे आप? एक में रखेंगे तो फायदा क्या हुआ? हर मशीन को यूज करना है ना प्रोसेस के लिए. अगर एक ही में रखेंगे, सारा काम एक ही आदमी को दूंगा तो वो अंडर प्रेशर में नहीं आएगा, लोड नहीं बढ़ेगा उसके ऊपर. फिर काम कैसे फास्ट होगा आपका? अगर आपकी कंपनी में एक ही आदमी है तो क्या करोगे? फिर मजबूरी उसी को पूरा देना पड़ेगा काम. Suppose there is only one person in your company.
Then what is that? All the 4 tasks has to be given to one person. But if you have 4 person in company, will you not split your task? One task for each person. Yes, sir. So similarly, if you have only one data node in your cluster, suppose single data node cluster hai aapke paas, only one data node. Then you're right. All the 4 files will come here. But if you have a bigger cluster, jahan pe aapke paas 10 data node hai, then why you want to write all the files to one data node? Tell me. Can we not write one each on every single? एक यहाँ पे लिख दिया, सेकंड यहाँ पे आ गया, तीसरा यहाँ पे आ गया, फोर्थ इधर आ गया. What's wrong in this? Okay. एक पे क्यों लिखना चाहते हो? एक पे लिखेंगे तो पूरा लोड उसके ऊपर आएगा ना, एक ही मशीन के ऊपर प्रोसेस के समय. That is not called distribution. If you had only one node, then we are forced to write all the files to one node because that is not an option. But if you have 4 multiple nodes, why should be writing all the blocks to one node? We should be distributing, right? जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया, 6 files को मैंने 6 nodes पे अलग-अलग जगह store किया. अगर distribution बराबर नहीं होगा तो फिर at runtime we'll be facing lot of problem. That is not called parallel computing. Parallel computing matlab every machine should be working independently and getting the job done. You got your answer? Yes, I understood. Any more questions till now anyone has? Sir, why don't we replicate NameNode? वो करेंगे ना, वो तो भी बाकी है मेरा explanation. वो तो important है, कल बताया था ना second name node है, we have a backup name node. Yes, sir. तो name node अगर बंद हो गया तो पूरा machine आपका system ही बंद हो जाएगा. All the pro services will stop. हाँ sir. So I'm coming to that in a moment. Now, how do we read a file? Suppose on the name node we had a file abc.txt and it has 2 blocks A and B. Again the same 6 nodes will create. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So A is on 1, 4, 5. And this is metadata 2, 3, 6. So client can only give the file name. Client does not know these details. So client के पास खाली file name रहता है. Now what is read? Can you tell me read का मतलब क्या होता है? Is it a process or it is just running like a cat command? Cat What? command. Only like a cat command. Like a cat or downloading the file. That is a read. Either Retrieve the download, data. retrieve the data or run a cat command on your console. Read is not process. For example, if I give you 2 queries, select star from table and select count star from table. So tell me the difference here, which one is read and which one is process. First one is read. First one is read. हाँ, वहाँ पे खाली we are retrieving the data, but counting में क्या कर रहे हैं? We are running a program. Process. उसके अंदर resources चाहिए होता है, उसमें yarn लगेगा. Read में yarn services की जरूरत नहीं है. Read में you are just retrieving the data from the file. So remember in Hadoop, HDFS can do read and write without yarn. Keep that in mind. For reading and writing, I don't need yarn services. But for processing, any type of process comes, उसके लिए आपको yarn services लगेगा, जो मैंने कल बताया था, resource management. So what is yarn? That we'll learn later on, but just remember the difference here. Read and process are 2 separate things. So I want to read or download this file from my Hadoop system to my local machine. So I will give the name, file name to the name node. And name node now will return what? It will not return all the 6 addresses.
it will return only one address each for each block, और वो भी सबसे nearest वाला. So it is going to return A on node 1 and B on node 2. So this data will be given to the user, and user will now read one by one sequentially. You can't read second block before the first block. So the data has to come in a sequential order. So whatever sequential number is given to the metadata, 0, 1, there is a sequential number starts from 0 in the metadata. So you have to read the data sequentially. So first you'll be reading A block and then B block. But at the time of writing, you can write parallelly. When we write the data blocks to the cluster, that time we can write parallelly, because that time we are not worried about any mismatch of data. But here we need to maintain the order. We cannot read parallelly. So we have to read one by one sequentially. First A block will be read, then the B. And likewise, entire file will come to your local machine in a merge form. So it will become a single file. And you can see the file in a merged form. So you can download the file in a merged single file format. So when we upload, the data becomes distributed. When we download, it becomes a single file and comes to your system. So that is called read or downloading the file. So many times after processing data, we need to download the result. So that time we can do a read process and we can collect the data into our local system from the Hadoop system. Right? So we are reading only the nearest block of each block ID, A and B in this case. Is this clear, everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So now you understand the importance of NameNode. If your NameNode stops, then what happens, guys? Your entire cluster stops, right? Yes. Because we need NameNode for reading and writing both. Whenever we are reading something or writing something, we need NameNode. Without NameNode, it is next to impossible. So now how do we handle this without, and remember one thing, NameNode is important, metadata is also more important. Now this metadata we created right now, A ka hai 1, 4, 5 and B ka hai 2, 3, 6. Suppose your NameNode is working, but your metadata data got destroyed. Somehow it got corrupted. Can you access your data? Tell me. Your NameNode is working, No, but sir. somehow the metadata got corrupted. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Because without knowing the information of the location, from which node are you going to gather your data? There are millions of blocks. आपको पता नहीं चलेगा कौन सा block कहाँ पर है system में. So that means metadata is more important than actual data. Your actual data is replicated 3 times. अगर एक भी block fail होता है, you can recover data. But metadata should be doubly secured. If you lose your metadata, there is no way you can recover your data. Your data is lost forever. Actual data is kept on DataNode, but in spite of that, आपका data, you cannot access it. So that's why for NameNode, we have to do 2 things. One, our metadata should be secured. Secondly, my NameNode should be in a running state. These are 2 important objectives of NameNode. Somehow make your metadata secured, proper backup loads ka, and make your NameNode always in a running state. So that can be only done by a replica of NameNode, a backup NameNode. So now let's see the backup plan for NameNode. There are 2 backup plans. One is an old one and one is a current one. Let me just pull up that slide also.
And that is called secondary name node and standby name node. If you can see the screen, so don't look Yes, at sir. this part. This part is not required. Now look at these three machines. Your center node is called active name node. Now in the older version of Hadoop, like in Hadoop 1.x, when Hadoop was created for the first time, they had this secondary name node plan. Now, what is the role of a secondary name node? It was working like a backup name node, only pure external backup. So what was happening in those days? After every 1 hour, we were copying the meta files to secondary name node, every hour. And what were those meta files? Locations of data nodes. But they have some name given. They are called FS VL. image, FS image and edit logs. There are two files which are called meta files. So these files were copied after every 1 hour on the secondary name node. So if active name node failed in those days, at least one thing was very secure. Your metadata was secured, except that last hour ka jo bhi bacha hua hai, that was not secured. But whatever majority of data was secured. But could we keep name node running? No. Because once the active name node stops, I cannot convert secondary name node into a backup name node. No. Because there is no connection between secondary name node and data node. So what would happen? There would be a lot of downtime in the system. So certainly nobody likes downtime in your cluster. So they improved upon this and they created another name node called standby name node. Now what is standby name node? It's a exact replica of your active name node. So these standby name nodes also communicate with the data nodes. So they receive heartbeat signal as usual, as they are received by active name node. Now here the data transfer takes place through another machine called journal node. So once we write to journal node, and then from journal node we are writing to standby name node. Now why we are doing through another node? Because we can create multiple standby. So we can also create another standby because it's always better to have two standby. Suppose one standby and one active name node fails. Yeah. एक बार वापस बताना। कौन सा फर्स्ट पार्ट का समझ में आया Hadoop 1.x का? नहीं सर, मेरे को थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। फर्स्ट पार्ट, हाँ, फर्स्ट पार्ट में रिपीट करता हूँ. So in Hadoop 1.x, what was there? We had this name node and this name node, right? Standby नहीं था old system में. But this was working like an external backup. This name node was not connected to your cluster. So backup ले सकते थे every hour. But after this node failed, the system go into a stop condition, like it goes to into a down condition that you cannot run on that cluster. So there would be a downtime in your cluster. This part is clear? yes, System आपका कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा. Because secondary name node cannot work like a active name node. उसका खाली एक ही रोल था, बैकअप करना बस. So what we have achieved by this, tell me? By secondary name node, what have we achieved? We have saved the metadata for the we have only done most of one the time part. except the Last 1 hour hour. ka time. So metadata we have secured. So what do? We recreate the active name node, we fix the name node, we copy the metadata, and then we restart the cluster. तो उसमें कुछ time लगेगा.
it can take some time to restart your cluster. This is what we call downtime. So certainly in a business environment, nobody likes downtime. That disturbs your flow. सारे process रुक जाएंगे, कुछ भी काम नहीं कर पाओगे आप लोग. So they came up with a new plan called standby NameNode. First part is clear now, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, what does standby brings to the table? Matlab, what does that standby do what secondary NameNode could not do? That we have to understand. First of all, we have to understand standby will communicate with all the data nodes. So they will receive heartbeat signal like active NameNode are receiving heartbeat signal. So that means standby NameNode is always in the touch of the existing data nodes. It is receiving proper heartbeat signal. It is updating the metadata, whatever metadata is getting updated. Any changes done on the NameNode side can be transferred through log file through a journal node. Yes. So यहाँ पे direct transfer नहीं होता है. It is done through another machine called journal node. And journal node will write to standby. It may write to another standby. So we may have more standbys in the system. And they will also receive heartbeat signal. So in a way, standby NameNode will be a perfect replica of your active NameNode. Now the question comes, if your active NameNode fails, should we go for automatic failover transfer to these nodes standby or manually? Automatic. Automatic. It should be automatic, right? Manually क्या मतलब है? Because manually it might take a lot of time. Nobody's there in the office, then what happens? And the whole thing will have to wait till somebody comes up. Yes, sir. So it has to be automatic failover transfer. The moment active NameNode fails, one of the standby should become your active NameNode. So how that is possible? That is possible by an external service called Zookeeper. So we have some services running in Hadoop cluster. They are called Zookeeper services. Zookeeper has a lot of other roles. It's like a joker card, you can say. It has many other functionalities. So here is also playing a very important functionality. Can you tell me what is that functionality Zookeeper is playing here? How will Zookeeper know that your active NameNode has stopped working? So heartbeat मिलना बंद हो गया. So all these nodes will be sending heartbeat signal. All NameNodes, standby and active. Every machine will send a heartbeat signal. Just like DataNodes are sending heartbeat signal to NameNode, active NameNodes and standby NameNode will be sending heartbeat signal to Zookeeper. So what role Zookeeper is playing here? It is playing a role of a super NameNode, you can say. It is just playing a role of a super NameNode. It is monitoring the working of the NameNode, you can say. And the moment active NameNode stops working, it can elect any one of the standby into an active NameNode. And then your cluster does not stops. So there is no downtime. Your cluster is running, and this concept is called NameNode high availability. Because you are making your NameNode available to all the users all the time. In short, we can call it HA. So NameNode high availability, and your metadata is secured, and you will never have a downtime in your system. So what have we learned since yesterday in HDFS? You must have observed that I can have a block failure. I can have a node failure. मेरा node भी fail हो सकता है कभी भी. I can have a rack failure. I can even have a NameNode failure. But in spite of all these failures, my system will not fail. That will not fail.
And that is a very powerful message given by HDFS, that the system is reliable and system is fault tolerant, that in spite of all, any failure can happen. कोई भी machine कभी भी stop हो सकती है. But in spite of that, your system will never fail and your system will be always running. There will be no loss of data. That is also second guarantee it's giving. And that is why Hadoop is used very widely, because अगर data loss का डर होगा तो कोई भी use नहीं करेगा system को. But you can now understand why HDFS is reliable, that any machine can fail anytime. You can have a rack failure, node failure, block failure, NameNode failure. But any machine can fail, but your system will not fail. Overall system will be always running. All of you agree with this statement? System will not fail in spite of any failures. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So this is what HDFS is all about, Hadoop distributed file system. So we store data in a distributed manner. So, Yeah, tell me. now if we have multiple amounts of standby nodes, why do we still need the secondary node? No, this is not required. Nowadays, people don't use it. So they don't use it, no? No, we don't need it. Okay. But in a single node, we still use it secondary name node. Because demo में secondary name node ही चलेगा. मतलब? That I'll speak about when I show you the demo machine, that whatever they're giving you, that VM. Because in the VM, they provide you single node cluster. Sir, Single- when There's 7 node. Sorry, What's the single node construct? What about cluster. When we talk about practicals, I'll speak about that. But single node cluster में we still use secondary name node. But production में जब आप जाओगे, when you work on in different companies, organizations, you'll find standby name node, not secondary name node anymore. Okay. sir, when active name node is down and when we bring it up, then metadata is erased or it is there. Erase है या नहीं है वो भी, that has no meaning. It is now invalid. That metadata is not valid anymore. So whatever changes have happened till now on the main name node, it is not going to be in sync. So it has to be taken up as a fresh name node. And you have to delete whatever metadata files are there in the system. सर वो जर्नल का बताइए ना एक बार प्लीज. कौन सा? जर्नल. Journal node is a separate machine, you can say. क्योंकि डायरेक्ट लिखने के बजाय we are writing to journal node and from journal node we are writing to standby. In fact, journal node भी 3 होते हैं. क्योंकि journal node एक फेल हो गया तो क्या करोगे? तो उसमें भी एक लीडर होता है, 2 फॉलोअर होते हैं. ज़ूकीपर में भी 3 मशीन होती हैं, एक लीडर 2 फॉलोअर. So everywhere we are maintaining fault tolerance. So journal node is like a normal node. We are writing to the journal node, and from there we are writing to the standby name node. Zookeeper में क्या स्टोर होता है? Zookeeper में actually वो machine के it is like a coordinator. Zookeeper में store कुछ नहीं होता है. Zookeeper में बहुत सारे different objectives काम करते हैं. तो हर ऑब्जेक्टिव, जैसे यहाँ पे वी आर रिसीविंग हार्ट बीट सिग्नल, तो ज़ूकीपर जैसे दूसरे एप्लीकेशन में काफका में वो टॉपिक डिटेल स्टोर करेगा, काफका में यूज करना है, स्टॉर्म में यूज करते हैं. So Zookeeper is like a joker pack. It is used in various applications. So कोई भी एप्लीकेशन है वो Zookeeper को अपने हिसाब से यूज करता है. जैसे HBase पढ़ेंगे तो HBase में Zookeeper की जरूरत पड़ती है. There also we require Zookeeper in HBase. So Zookeeper is like a joker pack. It is being used in various different applications. So here इसका रोल खाली heartbeat signal receive करना है and allocate one of the standby name node into active name node. सर ये जो स्टैंड बाय नेम नोड है वो
जो नियरेस्ट रहेगा उसको एक्टिव नोड नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो इट इलेक्ट्स एनी वन ऑफ देम। ओके वो जू कीपर इलेक्ट करता है किस, मतलब बोथ आर सेम ना, सो इट कैन इलेक्ट एनी वन ऑफ देम, ऐसा कोई नियरेस्ट वाला चक्कर नहीं। So more clarity will come when we do the practicals, and we will see the physical file split also happening in the system. So let's open our VM, everyone. All if you got the VM, everyone, link, Yes, sir. please open it up. ग्रुप में कोई सीडेक का लिंक आप भेजना। So big data cluster lab है। सिंगल कुछ नहीं है, नहीं, मैं दोनों ट्राई करता हूँ। ये नोवो प्रो का प्रॉब्लम है, ये अगर पूरा नहीं देंगे तो वी हैव टू राइट टू देम। आई हैव बीन यूजिंग नोवो प्रो फॉर लास्ट 3-4 years. Sometimes they give incomplete labs. So we don't have this, the one you open, right? We have big data cluster lab, right? अच्छा, आपके पास एक ही लिंक है? हाँ। हाँ Yes, sir. Yes. Yeah. You don't have this. You don't have the No, first no. link at all. No, No, sir. no, 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 sir. Only big data cluster. Big data cluster lab. The one on the right we have. तो ये खुलने तो पहले ये बंद होएगा, उसके बाद ही होगा। What option they have given you inside that? Can you read out? So we have Cloudera Manager Portal, Web Shell, Cloudera Hue Login, and Jupyter. That is what I want. This type of setup. I want So desktop and web shell. We have Web Shell. नहीं वो web desktop भी चाहिए, because इसमें desktop में then you get complete all details. See, that is a problem. They give you that one setup now, which is only having that limited access. वो limited access वाला वो interface नहीं चाहिए अपने को, because इसमें Google Drive link सब रहेगा. I can share files with you. तो एक जना कुछ स्क्रीन शेयर कर दे ताकि बता सके क्या क्या है इसके अंदर। वो मैं समझ गया. I know that. I know this. I know Neo Pro very well. उन्होंने 2 ऑप्शन दिए, आपको 4 दिए होंगे. जुपिटर होगा, Shell, होगा, SQL query, and Cloudera Manager. यहाँ पे Hue भी है, Cloudera Manager भी है, होम फोल्डर भी है, Eclipse भी है for writing programs. वहाँ पे Eclipse ऑप्शन नहीं होगा आपके पास. नहीं. No, Python है This सर वहाँ ये पे। डेस्कटॉप वाला ऑप्शन बेस्ट है.
So is ma'am is there with us? Yes. Vinita? Yes, I yes, think yes. so. Yes. Vinita, are you there? Yes, sir. Yes, sir. So tell them to give me, give every participant the first option. Only the first option or both options? I don't need the second option because in that first option I got everything. So I don't need that second one. Okay. Okay. So what they have, I need a desktop and a shell. That's it, because it covers everything. Okay. If they give Cloudera Manager, that means I'm limited to Cloudera Manager and you only. Mm-hmm. Jupyter I don't need because I'm not running any Python programming here. Okay. So when I run Python, I'll look at that later on. We'll So check. let Jupyter come. Let Jupyter be there because we might use it in our programs for Python coding. So it is better if they give both, like what they have given to me. Okay. Okay. We'll check with them, sir. Because they have to just give extra link because already they have given to me. Yes. So they should be, because that is the reason they are given to me, to test it. Because always I have a complaint. They know me very well. Okay, if you give limited information, then I cannot work. So I need full access. Okay. Because you cannot access through ID, Java, Google Chrome. You cannot have file system. Yes, I will check. So that those things are not available in that option. Okay. You're getting Pragati or you're getting CDAC logo here? CDAC. CDAC, sir. CDAC. CDAC, sir. ये तो मेरा पुराना logo है actually. Let me log out. सर वाला ही लोगो है ना अपने भी तो नहीं अब हमारे CDAC है सर. I've logged into a wrong IP address. So the link, take the link from the chat. This one is, I think, for Pragati Software Private Limited. And the link we got is for CDAC login. Let me close this. If I connect here, CDAC home. तो मुझे भी एक ही लिंक मिला होगा फिर. But that is incomplete. We want desktop. Hadoop lab $543. So even I got one only. That was a old lab of Pragati Software. So, ma'am, please ask them to give me a complete even desktop. Okay. Okay, sir. Because this is incomplete. I cannot access a desktop here. Somehow we'll manage today. So please tell them to it tomorrow. Okay. So we have this web shell. Now you can connect to your web shell like this by using this username. Password, you have to make it readable format first. So Hadoop lab 234. And paste it here. It will not get displayed. You just enter it and it will get connected. So if you type pwd, you are in some home directory, home, big data, blah, 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 whatever ID you have.
So this is your terminal, or this is your client machine, you can say. And if you go log on to your Hue portal, before logging on, let's check the services. So we can run command sudo jps what is the password again? JPS. It's a command to know the current services. So this is not, so we cannot find out here by JPS command. What are the services running? Okay, let's open Cloudera Manager. And Cloudera Manager, what is the password? So you can see the Hadoop services running HDFS here. Click on HDFS. So 1 minute. We are trying. So, ma'am, let it be this way only because here we are using multi-node environment. Okay, sir. So don't change it. But Or Cloudera Manager portal, right? yeah, Cloudera Manager. But I need a desktop. So tell them how we can incorporate desktop. Okay, I'll ask them. But don't change the cluster, huh? Otherwise that will become a single node cluster. This is 5-node cluster. Yes, sir. Yes. So this is much better. So that will be a single node cluster, which we don't want. एक क्लस्टर कैसे देखा जा सकता है एक बार फिर से बता सकते हो? Go to Cloudera Manager. हाँ लॉगिन किया उसमें. हाँ तो user ID password copy करिए यहाँ से. हाँ हाँ. And then connect. So you will be in your Cloudera Manager. You can see there are so many services running in your cluster. And one of the services is HDFS. Click on HDFS. Yeah, HDFS capacity total by total. Yes. So here you can see that there is how many data nodes are there? 5. Yes, sir. So if you click on data node segment, you can see there are 5 data nodes here. और सबका IP एड्रेस यहाँ लिखा है 10.1.2.175.194.209.40.103. If you click here, you can see here. सर कहाँ पे क्लिक किया सर? होस्ट पे क्लिक किया कि कहाँ पे? डेटा नोड में? नहीं एक मिनट. HDFS पे क्लिक किया पहले. यस सर. फिर हमने डाटा नोड पे क्लिक किया. हाँ डेटा नोड पे क्लिक किया. तो आपको 5 डेटा नोड के IP एड्रेस दिख जाएंगे होस्ट नेम के साथ. और जब आप इंडिविजुअली किसी होस्ट नेम पे क्लिक करेंगे तो आपको IP एड्रेस दिखेगा कौन सी IP मशीन पे वो डेटा नोड काम कर रहा है. और ये सबके सेम ही आएगा. सेम ही आएगा, अलग अलग IP एड्रेस आएगा ना. जैसे इसका है 10.1.275, इसका 10.1.2.194. तो होस्ट नेम में IP एड्रेस लिखा हुआ है. यू कैन मेक आउट फ्रॉम दैट. होस्ट नेम के अंदर ही IP एड्रेस मेंशन किया हुआ है. So this is five data node cluster. हाँ, tell me. सर ये पांचों के पांचों है सर. ये सभी प्राइमरी है ना? नए वाले मतलब ओरिजिनल प्रॉपर. प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं होता. डेटा नोड होता है. इसमें कोई डुप्लीकेट मतलब आई एम नॉट एबल टू गेट इट. डुप्लीकेट कहाँ से हुआ? फाइल्स डुप्लीकेट होते हैं डेटा नोड में. सॉरी सर वो कंफ्यूजन हो गया. हाँ मतलब अच्छा है. गुड. कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए. सर उधर नीचे हेल्थ सिस्टम में शोइंग कि डेटा नोड हेल्थ 3 स्टिल बैड. मतलब और 3 डेटा नोड्स है क्या? किधर लिखा है? बैक जाइएगा स्टेटस में. इफ यू स्क्रॉल डाउन उधर नीचे
कहाँ नीचे है? Data node health good, free still bad. अरे वो हिस्ट्री है, वो पहले का हिस्ट्री है। Okay. वो तो आप देखो ना लास्ट में 2 12 34 को सब ठीक हो गया, ऑल फाइन। नहीं तो ऑल फाइन को यहाँ पे ऑल फाइन को ग्रीन टिक नहीं आता यहाँ पे। Okay. कोई भी डेटा नोड क्रैश हो जाएगा ना तो यहाँ पे रेड क्रॉस हो जाएगा। सर देखा ना, गुड हेल्थ 5, ऑल 5, नन, ऑल 5 इज क्लियर। वो पहले का स्टेटस है, कभी पहले कुछ रहा होगा, डेटा नोड क्रैश हुआ होगा। या टेल मी। सर यहाँ पर एक रैक लिखा है, वो जो आपने अभी पढ़ा है वो उसका वही है क्या वो? हाँ रैक है, सिंगल रैक है यहाँ पे। सर तो डिफॉल्ट वो रैक जब दिया है नाम उसको, उसी रैक में अंदर 5 डेटा नोड है। ओके, एक ही मतलब एक ही जगह 5 डेटा नोड? हाँ अभी वो डेमो कंपनी है ना, कोई फिजिकल प्रोडक्शन कंपनी तो है नहीं कि 2 रैक ओके मेंटेन करेगी। So, उन्होंने 5 डेटा नोड को एक ही रैक में रखा हुआ है। और आर यू ऑल एबल टू मेक आउट दीज आईपी एड्रेसेस? हर 5 मशीन के डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेसेस हैं, देखो। सर ये एक डेटा नोड 15 GB का है, राइट? एक डेटा नोड कितने जीबी का है, एक मिनट चेक करना पड़ेगा। हाउ डू यू नो, कहाँ लिखा है? और इन फिजिकल फिजिकल मेमोरी 4.5 लिखा है ना, कितना 15 जीबी? नहीं, मतलब 15 जीबी कैपेसिटी 15 GB होगी और 4.5 GB फिल है, ऐसा कुछ? वो यूज्ड हुआ है, कंज्यूम्ड हुआ है, बट 15 जीबी की मशीन थोड़ा होगी वो तो मेमोरी है। 15 जीबी तो मेमोरी है, रैम है। रैम है। हार्ड डिस्क तो बहुत ज्यादा होगी ना सर? हाँ बट हार्ड डिस्क कैपेसिटी यहाँ नहीं लिखी है, तो वही मैं देख रहा हूँ कहाँ से मिलेगी आपको। नॉर्मली कहीं ना कहीं होना चाहिए हार्ड डिस्क कैपेसिटी, साइज ऑफ द डेटा नोड होना चाहिए। सर कॉन्फ़िगर कैपेसिटी क्या होता है वो? उधर डेटा नोड में नीचे है फाइल सिस्टम करके, आई थिंक। कहाँ पर इफ है? यू क्लिक ऑन द आईपी ऑफ द आईपी पे क्लिक करेंगे and if you go down other file systems करके है, वो 433 GB 433 GB। अच्छा, दिस इज डिस्क साइज राइट? यस। उसका डिस्क साइज 433 GB है सर। नहीं, वो डेटा का फोल्डर का साइज है कुछ। सर टीबी में होता है क्या वो? नहीं, नॉर्मली तो डेमो मशीन है, बट इन प्रोडक्शन स्टेटस में दिखा था वो कॉन्फ़िगर्ड कैपेसिटी। हाँ सर कॉन्फ़िगर कैपेसिटी दिखा रहा है। कहाँ पर? HDFS पे आप एक बार क्लिक करोगे तो आ जाएगा। वो ऊपर में। हाँ, ये 2 TB है, मतलब पांचों मशीन का कैपेसिटी 2 टेराबाइट्स है। हाँ तो वो 400 जो लिखा है वो बराबर है, 400 इंटू तो 500 GB है। हाँ 500 GB रहेगा। तो कॉन्फ़िगर कैपेसिटी का मतलब हमेशा डेटा नोड की कैपेसिटी लेता है। तो पूरे क्लस्टर का कैपेसिटी 2 टेराबाइट्स है। If you take your cursor there, it is giving you some comment displaying the amount of configured cluster that is used space. The capacity takes into account reserved for non-fused DFS space. So 2.1 TB is total 5 node capacity. Now let's go to NameNode. So NameNode में एक active एक standby देखो, दोनों का IP एड्रेस अलग है। तो इसमें सेकेंडरी नहीं है ना? नहीं, सेकेंडरी नॉट रिक्वायर्ड। सेकेंडरी उसमें है जो मेरे वाले पुराने वाले सेटअप में था, सिंगल नोड में, जो डेस्कटॉप में था, दैट इज सिंगल नोड क्लस्टर। बट इफ आई गो फॉर सिंगल नोड क्लस्टर दैट विल बी अ बैड आइडिया, सो आई विल नॉट गो फॉर दैट। सो बट हाउ टू गेट द डेस्कटॉप? मैम डोंट चेंज द सेटअप, लेट द सेटअप बी सिंगल मल्टी नोड क्लस्टर ओनली। एंड विनीता, आर यू देयर? She's not there right now. We'll inform. So just inform her that the setup should not be changed. Only we need to add a
Desktop. Desktop, I don't know whether they can give the desktop or not. I have to talk to them. I'll speak to Vinita later on. नहीं तो क्या करेंगे वो उल्टा कर देंगे. They'll give us single node cluster, which is not good. Why we should go for single node when we have 5 node cluster? So here you can see we have one name node. If you click on name node, you can see the IP address. And इसका strength कितना है? It is around 340 GB. तो इसका size कम चाहिए. It's not required very much. So 340 GB will be the primary name node or 340 GB का secondary name node? Standby. हाँ, standby. Sorry. Ideally same होना चाहिए, but यहाँ पर actually standby का कम है वो size. Ideally it should be same. But यहाँ पर उन्होंने कम दिया है, 295 GB दिया. So it should be same. Okay, so this is name nodes. Now how many gateways we have? Gateway matlab client machines. So there are 3 client machines, see, which are connecting to your cluster. So इसको पेन ब्रश पे लेके आते हैं पूरे सेटअप को. So gateways are what? Client machines. Huh? So अपना gateway क्या है? How do we know? तो इसको कैसे लेके आ रहे हैं पे? नहीं, कोई अपना gateway ये है 10.1.204. So we are using this gateway. Just check your IP address in the shell, web shell. कौन सा IP मिला है आपको? Yes, So yes, same yes, here, same. 10.1.204. So that gateway we are using, this client we are using. We are using this client to interact with the cluster. So gateway और client machines are very important. जैसे मैंने कल आपको कहा था सब लोगों को, we will be keeping all the softwares on gateways. Gateways are responsible for connecting to your cluster, talking to your cluster. So whatever command we'll be typing from this gateway or this is my client machine ka terminal. So if I try to replicate this on a paintbrush, what will happen here? I have a cluster like this. So I have one name node machine. And I have one second standby name node. And there are 5 data nodes. In my cluster. So these are DN1, 1, 2, 3, 4, and 5. And then we have 3 gateways, 3 client machines. Okay. So you are using on all personal laptop ना? ऐसा कुछ नहीं है ना? CDAC का laptop है या तो ऐसा कुछ? No, sir, personal laptop है. हाँ? Personal laptop है. Okay, okay. So what we need is we need okay, Java. So we will install our Eclipse on our own machine only. So Eclipse का issue नहीं है. We just need FTP, file transfer protocol. That is the only thing I need. I don't need home page anymore because we can manage without that. सर आप इंस्टेंस पे आके क्या किया था, मतलब सर एक बार वापस इंस्टेंस पे आए थे ना आप, DBM HDFS के इंस्टेंस पे आए थे आप? एक मिनट कहाँ पर हूँ मैं? 1 मिनट. हाँ, यहाँ पे था, बोलिए. इंस्टेंस पे आए थे, फिर आपने कहाँ पे गए थे? स्टेटस पे गुड हेल्प पे गए. नहीं, HDFS पे क्लिक किया मैंने.
यस सर, फिर आप अब इंस्टेंस यहाँ पर ये डेटा नोड है, नेम ये नोड आपने है, बता गेटवे। दिया। हाँ, ये था। तो गेटवे पे क्लिक करो ना आप। अच्छा, गेटवे। तो गेटवे के अंदर तीन गेटवे है अपने पास, 3 क्लाइंट मशीन है। यस सर। सो वी आर यूजिंग वन ऑफ द क्लाइंट बाय पट्टी। तो हम लोगों ने जब कनेक्ट किया ना, हाँ, तो वी कनेक्टेड थ्रू दिस आवर मशीन टू द पट्टी। नहीं ये सर, मतलब मशीन, ये, सॉरी सर, ये गेटवे का रोल क्या है? कोई बार वापस। gateway is responsible for uploading data, writing data to the cluster, reading data or running programs on the cluster. तो कहाँ से रन करोगे प्रोग्राम्स? यहाँ पे क्लस्टर में जाके तो रन नहीं करोगे ना। गेटवे के थ्रू हेल्प लेंगे। हाँ, गेटवे से रन करेंगे। गेटवे इज अ क्लाइंट मशीन। जैसे अभी डेटाबेस में कैसे हैंडल करते हो, क्लाइंट मशीन से रन करते हो ना सर्वर पे। यस सर। सो दिस इज योर वन सर्वर। यू कैन अज्यूम दैट ये आपका बहुत बड़ा सर्वर है, वन बिग सर्वर। बट एक मशीन नहीं है, बट देर आर मेनी मशीन, बट यू कैन से दिस इज अ लॉजिकल सर्वर। एक लॉजिकल सर्वर है जिसके अंदर वी कैन स्टोर एनी अमाउंट ऑफ डेटा। सो सर्वर के ऊपर तो बैठ के काम नहीं करेंगे, वी नीड अ क्लाइंट मशीन और अ गेटवे। और हमारे पास ये 3 ऑप्शन है, मतलब एनएफएस गेटवे। हाँ, 3 दिए हैं, तो उसको मतलब हाँ। कंपनी 3 या 4 गेटवे रखेगी, 50 गेटवे, बिकॉज these gateways are responsible for interacting, but there are 1,000 employees, so everyone will not get a personal client machine. They will connect to these gateways. So ये gateway also is kept on different racks क्या? अगर हाँ, different location different है ना, वो तो it cannot be on the same rack. ये तो ऑफिस लोकेशन में रहेगा कहीं आपका। Okay. Now और look at अभी here. हम लोग जो कनेक्ट किए 101.204 से, हाँ, we didn't use पुट्टी, तो पुट्टी ऐसे बैकग्राउंड में ही चल रहा है। हाँ, पुट्टी आपने जब वो टाइप किया ना, ये जब आपने इसको क्लिक किया ऑप्शन को, जब आपने वेब शेल को क्लिक किया ना, वो बैकग्राउंड में पट्टी एक्सेस हो गया। ओके। बिकॉज आपने अपनी मशीन से आपने इस सर्वर को, हाउ कैन यू कनेक्ट टू दैट सर्वर विदाउट पट्टी? टेल मी। नहीं, ओके। हाँ, तो नहीं कर सकते ना, तो वो कुछ तो चाहिए इंटरफेस कनेक्ट करने के लिए। अभी नाउ यू आर नॉट वर्किंग ऑन मशीन, यू आर वर्किंग ऑन दिस मशीन। और इसमें आप अभी एलएस करोगे ना, पीडब्ल्यूडी, सो दिस इज माय यूजर आईडी 4385। if I do cd dot dot and now do ls, तो कितने सारे यूजर हैं, कितने सारे यूजर हैं जो इस मशीन से कनेक्टेड है, इस गेटवे से। कैन यू सी? हर यूजर को अपना होम डायरेक्टरी अलग से मिला है काम करने के लिए। सो एक क्लाइंट पे देयर कैन बी मेनी यूजर्स हु आर कनेक्टेड, or they would be having their own home directory. So one person is not going to work on one client. In fact, on one client, you can have hundreds and hundreds of people working on it. तो ये गेटवे उसके हिसाब से बनाते हैं कि कितने लोग से, नंबर ऑफ पीपल्स आर यूजिंग, तो उसके हिसाब से वो गेटवे। ओके सर। So now you can go back. cd टाइप करेंगे तो you come to your home directory, pwd. So you are back to your home directory, and ये भी खाली है, blank है, empty है. So here we will be running our, we will writing our programs जो भी डेवलप करना है, और यहाँ से प्रोग्राम फायर करेंगे। कोई भी डेटा अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, प्रोग्राम को रन करना है, कोई क्वेरी रन करना है, तो इस जगह से वी आर गोइंग टू फायर क्लाइंट मशीन से टू द क्लस्टर। क्लस्टर का खाली 2 ही काम होता है, टू स्टोर डेटा एंड प्रोसेस डेटा। रिमेंबर, store the data distributedly and process the data distributedly. Cluster has only these two words.
But whatever instruction we'll be giving from the client machine. So NameNode ko bhi, suppose if I want to write something, I will give the instruction from client to NameNode, blah, 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 whatever you have to do. Is this clear, everyone? Have you understood the architecture? What is client machine? What is your personal machine? This is your personal laptop. This is me. This is I have connected to this client machine. Now I'll be interacting with this cluster. So what is the difference between client machine and gateway? And gateway. He is asking what is both are same Gateway. name. Both are same name. Gateway, edge node bolo, client machine bolo. We give them different names, but hai sab ek hi. Okay, Many people call them edge nodes. You call them gateway. You call them client. Gateway you bola gaya because it's a interface between the user and the cluster. So it is like a interface. You can only give the commands instruction from the client machine. So while we are Yeah. using this, जो हमने पुट्टी से कनेक्ट किया है, हाँ वो SSH का नेटवर्क से ही हम लोग कनेक्ट करते हैं ना, मतलब सिक्योर शेल नेटवर्क. वो अपन आपने पट्टी कल अपन क्लाइंट को पट्टी थोड़ा लगाएंगे यार, अपने थोड़ा नहीं SSH नहीं नहीं कर रहे. we No, we are not connecting to client using SSH. Now, why we have to connect to SSH? Where we have given SSH? सर पर हम ही तो क्लाइंट बनेंगे ना, हम यूज कर रहे हैं तो. Client is connected to Hadoop through SSH. Client जो ये machine है ना 10.1. ये connected है Hadoop through SSH. अच्छा ओके. अपन ने तो खाली remote access लिया है ना उस machine का. तो why we need SSH for that? Remote access is not SSH. Client is connected to Hadoop through SSH. हाँ, client is connected ना, because client is a dedicated, ये dedicated machine है. इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, हाईवे इंस्टॉल्ड है, HBase इंस्टॉल है, एवरीथिंग इज इंस्टॉल्ड हियर ओनली. मतलब सर हम यहाँ पे इस आईपी एड्रेस से कनेक्टेड हो और ये आईपी एड्रेस Hadoop से कनेक्टेड है इंटरनली. हाँ, वो वहाँ पे इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैं आपको बताऊंगा. When I open the configuration files, you can see that उसमें NameNode का IP address store है. So by default it connects to NameNode without giving any password. Is it clear, everyone? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. So we will now try to use this cluster through terminal, and we have one more option called Hue. So click on Hue, that will give you the file system of Hadoop. So Hue is a different platform, is a third-party tool, nothing to do with Hadoop, but it gives you the feeling of HDFS file system. So everyone click on Hue. So what is this? Please switch to the one of the available addresses. That doesn't work. कौन सा ऑप्शन है? At the So start, ऊपर जो blue ऊपर bar जो ऊपर you are जो- accessing a non-optimized. नहीं, वो दूसरा है. So it takes time to connect this. चेक करते हैं ना, Hue काम कर रहा है नहीं कर रहा पता चल जाएगा. Otherwise you have to tell them that Hue is not working. Sir काम कर रहा है पर It open works. होने We had में logged in the slow app, slow है. Slow, but slow.
It's not take so much time. You actually services बंद तो नहीं है आपका? चेक करते हैं. हमारे भी नहीं हो रहा सर. नहीं, यू सर्विसेज बंद तो नहीं है, चालू है यू. सर उन्होंने बोला था फर्स्ट स्टार्टअप में टाइम लगेगा, ऐसा बोला था सर. अच्छा. 4-5 मिनट लगे थे शुरू में. सर इसी वे में से वो डाउट हो रहा है सर. क्लाइंट से हम हुए ना, क्लाइंट आईडी. कैन यू रिपीट, क्या बोल रहे हैं आप? वो क्लाइंट कंप्यूटर बोल रहे थे, तो क्लाइंट कंप्यूटर तो हम ही होंगे ना जो हम यूज कर रहे हैं. तो हम क्या मतलब, हम अकेले नहीं है ना, उस क्लाइंट मशीन पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं. देखो ना यहाँ पे मैंने दिखाया आपको भी. हाँ हाँ, वो तो क्या मतलब हमारा लैप ही एक तरह से क्लाइंट मशीन को कनेक्ट हुआ ना. हाँ, तो वी आर नाउ ऑन द क्लाइंट मशीन इन वन ऑफ द फोल्डर ऑफ क्लाइंट. ओके. और वहां से हम लोग काम कर रहे हैं. वो हमारा होम डायरेक्टरी है, वो हमारा होम डायरेक्टरी हो गया. बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उसमें हम एक पार्ट है. बहुत सारे यूजर्स हैं एक हाँ, क्लाइंट हम पे. एक पार्ट है. हाँ, उसमें हम लोग एक पार्ट है. ओके. तो एक क्लाइंट को एक यूजर देंगे तो ऐसे तो बहुत क्लाइंट बनाने पड़ेंगे. दैट विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव. किसी का स्टार्ट हुआ यू? नो सर, इट इज टेकिंग सर. नहीं सर. सर वी सर. यस सर, स्टार्ट. It's taking almost 5 minutes. सर यहाँ पे सेम आप वाला ही आ गया सर. जॉब्स एंड बिग डाटा. And you see these 3 parallel lines. एक बार पूरा लोड हो जाए, then you have to open this your menu option, 3 parallel lines on the top left. Is it showing you blank page? Yes sir, same. Yes sir. So still it is not open. एक काम करते हैं, There is option. No, I will restart my सर टाइम लगता है सर. Apps and browsers आए सर ऑप्शन. सब वहाँ पे अटक गए. Impala हाईवे सब उसको है. ब्लैंक पेज है. किसी का मतलब ऑन हुआ यू पूरा फुल पेज? सर ये ओपन हुआ, सोर्सेस लिखा हुआ, इम्पाला, हाइव, सोलर एसक्यूएल,
हाँ, तो can you share your screen for a moment? Yes, sir. फुल तो नहीं हुआ लेकिन कितना हुआ है ये कितना हुआ है। हाँ, अभी खुला नहीं है, तो you can see हाँ, that. मतलब टाइम लग रहा है। No, this is पूरा open होगा, उसके बाद ही you have to click on this left option 3 bars. Okay, sir. उसके बाद ही कर सकते हैं, उससे पहले कोई मतलब नहीं है. So we have to talk to them that you is not working. सर वर्क हो रहा है, मेरा ओपन हुआ है। चेक कर बताओ, शेयर करो स्क्रीन, शेयर स्क्रीन. सर आपको अनशेयर करना पड़ेगा पहले। अनशेयर ही है। shared here. Pension. हेलो, नहीं दिख रहा है मुझे तो, नहीं सब कुछ कोड नेवर Desktop पे लाइव दिख दिख रहा रहा है। है. कोड नेवर लाइव का डेस्कटॉप पेज है. Where do I go? दिख रहा है अभी? Yes, yes. एक मिनट. हाँ दिखा आपका, तो क्लिक करो लेफ्ट हैंड साइड पे, 3 बार्स हैं वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे, टॉप लेफ्ट, ऊपर ऊपर, सबसे ऊपर यू के बाजू में. हाँ दिस वन. Horizontal bars. हाँ दिस वन क्लिक करो. अच्छा सरला कंट्रोल घेऊन टाक. क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा नीचे, फाइल्स ब्राउजर्स. सर आपको कंट्रोल दूं क्या? सर वो लोड हो रहा है। कंट्रोल देगा तो और नहीं होगा क्योंकि स्पीड 0 हो जाएगी। नहीं, यू कैन रन इट. क्लिक ऑन दैट बार ना, 3 बार्स. आया क्यों नहीं? It is still loading. ब्राउजर में सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा रहा, फाइल्स। सर मेरा हो गया लोड। सर हर चीज लोड होने में टाइम लगा। So you have to tell them, the कंपनी को बोलना पड़ेगा कि यू काम नहीं कर रहा. सर माइन इज विजिबल नाउ। So we had told them that they said the first Story time you वगैरह log in, it will take time to load all the classes and stuff. बाद में चलेगा. सर टाइम लेगा पर होगा सर, धीरे धीरे मतलब लोड हो रहा है मेरे साइड से। सर मेरे इधर किसी का 3 बार पे ऑप्शन पे कुछ आया क्या? बिकॉज यस सर आ रहा है सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. प्लीज शेयर योर स्क्रीन, जिसका भी दिख रहा है. हाँ, तो आपने उस पर क्लिक किया होगा ना, फाइल ब्राउजर पे. Yes, sir. हाँ, तो पहले वो दिखाओ ना 3 बार पे क्लिक करके दोबारा. तो यहाँ पे ब्राउजर में जाके फाइल्स पे क्लिक करना है आपको सबको. So on the right hand side you can see the Hadoop file system on Hue option, on Hue tool. So पूरा Hadoop file system आपको Hue में दिखेगा. होम डायरेक्टरी बन जाएगा ऑटोमेटिक यूजर आईडी के साथ. So this is a home directory on Hadoop. एक आपका होम डायरेक्टरी क्लाइंट मशीन पे बनेगा, एक होम डायरेक्टरी आपका नेम नोड पे बनेगा फॉर द क्लस्टर. Still it is loading. See the user is /user user ID. That is your home directory. ऊपर पाथ देखो ना, /user. Take your cursor up. हाँ ये user /home/user user ID. ये Hadoop का पाथ है. क्लिक करो यहाँ पे लास्ट में 7 के बाद, 7 के बाद क्लिक करो, जो एडिट दैट पाथ. हाँ क्लिक दैट और ये रिमूव करो. जस्ट गो टू रूट, ओनली रूट. यूजर भी निकाल दो, जस्ट रूट. हाँ एंटर, एंटर मारो. ये यूजर है, यूजर भी निकालो, प्रेस एंटर की.
enter, just press enter key. Sir, it's not working, sir. Enter के बाद भी. वर्क हो रहा है, बाद में होगा sir. तो ब्राउजर में जाके फाइल्स पे क्लिक करना है. हाँ, browser files. Okay. That will give you full access to your Hadoop file system का NameNode का. सर एक बार टाइम तो लग रहा है पर खुल रहा है, मतलब ब्राउजर वाला खुल गया, मतलब वो 316 फाइल्स का, उसको भी टाइम लगेगा 5 से 7 मिनट. But पता नहीं, I don't think so. This is happening for the first time with them. They had said that पहली बार आपको टाइम लगेगा, फिर आपका फास्ट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो ये रूट के अंदर सारे आपके फोल्डर्स हैं. How do you know they are folders? HBase is a folder के फाइल है. How do you know? लेफ्ट साइड में फोल्डर ऑप्शन बना हुआ है डायग्राम. हाँ, फोल्डर वो लोगो है. That is okay, good. That is good observation. But वो लोगो के अलावा और कुछ तरीके से पता कर सकते हैं अपन. ये परमिशन कॉलम में देखो वो स्टार्ट विद द लेटर डी. DR Directory. Yes, sir. ये डी से स्टार्ट हो रहा है. देखो Directory. It is a directory. तो अगर डी नहीं होगा तो फाइल होगा, तो क्या होगा डी की जगह? टेक्स्ट फाइल हो जाएगा. अगर कोई भी डी नहीं हुआ, डायरेक्टरी नहीं हुआ, तो क्या होगा डी की जगह? हाइफन आएगा. हाइफन आता है. तो अगर फाइल है तो हाइफन आएगा, अगर डायरेक्टरी है तो डी आएगा वहां पे परमिशंस के कॉलम में. So these are your Hadoop का root. Okay, now this file system we can access from terminal also. हमको U की जरूरत नहीं है, but I just wanted to show you. We can access all the commands from terminal. Terminal से we can run all the Hadoop commands. We can run the ls command, cat command, सब कुछ we can run it from Hadoop system. So let us now, can I take the control back, everyone? आपको दिखा everyone root? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I don't think so my U is working. So I will avoid U today. So now, if I want to see my local file system, or if I want to go to my client machine ka root, what command will I type? PWD. वो डायरेक्टली वो तो करंट डायरेक्टरी हो गया pwd भाई. Sir, cd dot dot. cd dot dot तो एक पीछे जाएगा, एक खाली कर्सर एक डायरेक्टरी पीछे लेगा. मेरे को रूट पे जाना है. CD slash ना. CD will only take me to home directory. So I have to write CD root and see the ls. ये सब फाइल्स मेरे कहां पर हैं? रूट ऑफ क्लाइंट मशीन पे. So there are so many log files created. I don't know why they're maintaining so many log files. They should have deleted. But there are these many folders: lib, media, mnt, opt. Let me see whether I can delete. rm star.log. Permission denied. We cannot remove. Here you can make out that we have this file system is separate. So this file system is which one? This one we are using. See. So I went to cd root on this folder. और जो मैंने अभी आपको ह्यू के थ्रू दिखाया, that is on the name node for the cluster. So there are two separate file systems. One is for entire cluster, and who is running that file system on name node. In the slides also I showed you earlier. If you remember.
that we are running the file system on the name node. So this file system is running for the cluster. So इस cluster में अगर आप 100 machine भी add करोगे तो how many file system will you have? अभी एक file system है, right? 8 machine के लिए. If I add another 1,100 machines to this cluster, how many file system will I manage for Hadoop? Will it be one or many? Many. It can be one also. One only ना यार, वो एक क्योंकि क्लस्टर तो एक ही रहने वाला है. अप टू मैंने कल भी बताया था, one name node can handle to 3,000 node, 3 to 4,000 node. So उसके बाद आपको एक्स्ट्रा नोड की जरूरत पड़ती है. So one name node is good enough to handle up to 3,000 node. So if I add 100 nodes also, I will maintain only one file system for the entire cluster. एक ही file system. और वो file system run कर रहा है name node पे. Just now we saw on you. So this file system is running on the name node, like here. So we have user and username. So you must have noticed that you have created your home directory for yourself. Have you noticed the user ID? वो आपका user ID है user के अंदर. Under user it is your user ID. Have you noticed that, everyone? You के ऊपर. Yes, sir. That is your user ID. जो user ID यहाँ दिख रहा है ना आपको सिस्टम में, जो आपको यहाँ दिख रहा है PWD करने के बाद, see, so my user ID is big data MIND 4385. So on my Hadoop, I'll get a folder by name of big data MIND 4385 under user folder. So user home directory is my home directory on HDFS, and this is my home directory on client machine. So I'll get two separate home directories, one on client and one on cluster. So whenever I need to upload my data, automatically it can go to that folder without any difficulty. So I can work on my cluster without any interference. So I'll keep my file separately in my cluster, and then we can use it. Are you all getting this, everyone? There are two separate home directories. Now, if I want to create a directory here in my local client machine, so what command will I use? mkdir. The mkdir we can use, and we can give our directory name like this. So this will create a directory on my client machine, not on Hadoop. But client machine say, how can we work on Hadoop file system? So we have a command, Hadoop FS special command. Or you can use HDFS, DFS. There are two options. First, we'll try Hadoop FS and see that Hadoop FS options. So when you use this Hadoop FS, you can run all these commands, append to file cat or mkdir. So all these actions will take place where on Hadoop side, not on your local machine. Local machine पे तो खाली mkdir लिखेंगे तो काम चल जाएगा. But if I want to do anything on Hadoop side, I have to start with these two keywords, Hadoop FS, and then give the option. So now if I want to create a directory, what path will I give? Hadoop FS mkdir -mkdir. And let's create a directory by the name CDAC. So we'll create a directory Hadoop FS here. mkdir / user big data. सर दिख नहीं रहा, आप कुछ राइट कर रहे हो? शेयर नहीं किया मैंने, किया ना शेयर? दिख रहा है सर। मैं ऊपर ले लेता हूँ ना, ऊपर ले लेता हूँ, सॉरी। अभी दिख रहा है? यस सर।
If you want to clear your screen, you can use Control L. Control L, L in London. Hadoop fs -mkdir /user. मेरा फोल्डर का नाम है बिग डेटा MIND 4385 /CDAC. CDAC is my new folder I'm creating. And this folder will be created on Hadoop side. So how do you can see? We can run a ls command now, -ls. If your U is working, you can see in U also कि एक CDAC folder बनेगा आपके home directory में. See, inside my home directory, I got a CDAC folder created, and it's a D. Starting letter is D, so it's a folder. So this folder we have created on the Hadoop cluster on the NameNode. Now I have a question for all of you. If I'm creating a folder on Hadoop, am I using NameNode or am I using NameNode and DataNode both? Both, sir. Both, sir. Okay. अब बताओ ये जो अब मैंने फाइल सिस्टम आपको बताया है, इसके अंदर जो याहू और यूजर क्या है, फोल्डर नाम है, राइट? Am I right? User is a folder, जो याहू is a folder. Yes, sir. Yes, sir. इसका रेफरेंस डेटा नोड पे कहां पर है बताओ? कहीं रेफरेंस आता है डेटा नोड पे कि जो याहू देन डेटा नोड पे क्या आता है? जब फाइल स्टोर करते हैं जब भी डेटा नोड पे ब्लॉक लिखते हैं ना, folder has no reference on DataNodes. So whenever we are creating folder, it is just a partition. ना folder क्या होता है? Windows में जब आप folder बनाते हो क्या करते हो? आपने खाली एक partition बनाया है सिस्टम में कि भैया I don't want to keep all my files in one location, तो मैंने एक partition create कर दिया. Simple. So it's a single part. It's a sort of a partition we are creating as a folder. Folder is not a file or something. So we have created this folder on Hadoop side on the NameNode cluster, but this is going to impact only NameNode, not DataNode. Sir, it is necessary to write after ls/user data. समझा नहीं? What you are trying to say? ls? सर वो ls लिखने के बाद वो /user/big data लिखा है ना ऊपर, वो पाथ है ना? नहीं, अगर वो देखो अगर ये नहीं लिखेंगे ना तो भी चलेगा, because that is your home folder. तो अपने आप आपको दिख जाएगा होम फोल्डर में CDAC है. सर मेरा फोल्डर क्रिएट नहीं हो रहा है सर. नहीं तो क्या एरर आ रहा है कोई MKDR? एरर नहीं आ रहा है सर, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है सर. नहीं तो कुछ होगा नहीं, उसके बाद कुछ रिटर्न में कुछ नहीं आएगा कि फोल्डर क्रिएट सक्सेसफुली, कुछ आएगा नहीं. न्यू लाइन न्यू ट्राई ls कमांड, देन ls करके चेक करो ना, -ls करके चेक करो. अच्छा मैंने ओनली ls टाइप किया इसलिए नहीं आया वो शायद से. -ls वर्ड यूज करना है यहाँ पे. हाँ, ls हमारा लोकल सिस्टम में चलता है. हडूप के साथ जो भी यूज करना है हाइफन वर्ड ऐड करना है. That is a difference. So most of the Hadoop commands are very similar to your Unix commands. So the only difference is that you have to start with Hadoop FS and then there's a hyphen word. सर नहीं हो रहा है, किया मैंने. शेयर करो स्क्रीन. ओके सर. सर ये कमांड मैंने यूज की थी पहले. नहीं आपने MKDR के बाद स्पेस नहीं दिया. वो कमांड है ना, उसके बाद स्पेस देना पड़ेगा. स्पेस कंपल्सरी. सर मैंने दिया था, उसके बाद मैंने ls लिखा था, या अपन को कुछ और लिखना है फिर? नहीं ठीक है, बस ये चलेगा. एंटर मारो, हो गया आपका. अभी Hadoop FS -ls करो तो आपको दिखेगा. CDAC बन गया. MKDR ls is a command, remember. उसके बाद आपको स्पेस देना है अगर फाइल पाथ देना है तो.
ओके सर। अनशेयर Thank you, करो या सर Hadoop FS डालना जरूरी है सर? Hadoop FS या फिर HDFS DFS, वही मैं आपको बोल रहा हूँ. You can use either HDFS DFS also. सर ये स्क्वायर ब्रैकेट में डॉलर से पहले जो फील्ड का साइन है ना, We can also use HDFS DFS. तो सर डायरेक्टली क्रिएट किया तो भी हो रहा है सर, मतलब MKDIR से? वो आपके लोकल पे होगा ना यार. हाँ हाँ वो लोकल मशीन पे होगा. MKDIR करूंगा यहाँ पे MKDIR टेम, तो लोकल मशीन पे बनेगा ना डायरेक्टली, क्यों नहीं बनेगा? उसको थोड़ा मैं रोक सकता हूँ बनने से. तो टेम बना ना मेरा एलएस किया तो टेम बना. यहाँ पे टेम मेरा लोकल मशीन पे बना है. ये क्लाइंट मशीन में बना है टेम फोल्डर. ओके सर। Hadoop पे नहीं बना है. Are you all getting the point? There are two separate machines. ये क्लाइंट मशीन पे हम लोग काम कर रहे हैं. अगर मैं खाली MKDIR यहाँ पे रन करूंगा तो इस मशीन पे मेरा फोल्डर बनेगा, Hadoop पे नहीं बनेगा. अगर Hadoop पे मुझे कोई भी काम करना है, I have to start with two words, Hadoop FS और या फिर HDFS DFS. So same option with HDFS DFS भी है, MKDIR. So बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन में आपको ये वर्ड मिलेंगे, HDFS DFS blah blah blah. Hadoop FS is a old. So हम लोग पहले के लोग हैं, इसलिए we are using Hadoop FS. So Hadoop FS is deprecated. Many times you find Hadoop FS is deprecated. बना सबका फोल्डर बना. And if you're running MKDIR, it's a local folder on the client machine. It is nothing to do with Hadoop. Yes, sir. सर एक बार आप स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर? हाँ करो 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 करो. हाँ. सर इसमें मेरा हो गया क्या सर ये Hadoop FS LS फॉर्म? हाँ हुआ ना आपका, बना ना CDAC. हाँ ओके ओके सर. तो वो एक्चुअली होम डायरेक्टरी पे बना है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी का नाम देने की जरूरत नहीं है. अगर एलएस के सामने अगर आप नाम नहीं देते ना तो इट बेसिकली लिस्ट योर होम डायरेक्टरी. Okay. So this is another way, it's a shortcut way. So either you can give Hadoop FS-LS, type करो Hadoop FS-LS टाइप करो यहाँ पे स्लैश. हाँ टाइप एरो दबा नहीं तो आता. हाँ अभी आया कर्सर. Hadoop FS स्पेस स्लैश यूजर, एलएस के बाद स्लैश फॉरवर्ड स्लैश यूजर और अपना है वो दे दो. हाइफन स्लैश के बाद रिपीट अगेन. यूजर USER स्लैश और बिग डेटा MIND 4381 बिग डेटा MIND 4381. एंटर. हाँ एंटर करो तो आपको वही CDAC देखेगा. ओके यस सर. It's one and the same thing. हाँ कोई शॉर्टकट है वो. अगर LS के सामने आप पाथ नहीं देते हो ना तो बाय डिफॉल्ट इट कनेक्ट्स टू योर होम डायरेक्टरी ओनली. हेलो सर. हाँ अरे डेट के सामने टाइम दिखा रहा है, वो कौन सा दिखा रहा है? टाइम अभी का है ना मेरे ख्याल से. देखो टाइम कौन सा टाइम दिख रहा है अभी सर 7:56 हो गया. तो ये तो इंडिया टाइम नहीं होगा, फिर वो US टाइमिंग होगा. ओके ओके. सबके सर्वर्स US में रहते हैं. ये सब अमेरिकन लोग हैं. सर्वर टाइमिंग होगा उधर जहाँ सर्वर होगा. हाँ वहीं का लोकल टाइम होता है. So what is the timing showing now? 14:08 na. So it is not. Sir, no, it is UTC time zone at least. Okay. It is your Greenwich mean time. 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं. Yes sir. हाँ. ये UTC time zone है. We are 5.5 hours ahead of UTC. So this is UTC time zone 14:18. In India it's 19:57. नहीं, you can add 5.5 hours तो आपको इंडिया टाइम मिल जाएगा. Yes yes. सर वो मेरा डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हो रहा है. शेयर करो स्क्रीन. गिव अ स्पेस आफ्टर MKDIR, हाइफन MKDIR के बाद. पहले बात तो आप लोग होम डायरेक्टरी में आओ.
CD टाइप करो, खाली CD, एंटर। हमेशा टिल्ड साइन से काम करने का। हाँ, mkdir, आपने mkdir में हाइफन नहीं दिया है, वो हाइफन है। अभी अभी बन जाएगा, एंटर करो। नहीं, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तूने बिग डाटा माइंड्स नहीं लिखा उसमें। हाँ सर। हाँ, वो बिग डेटा माइंड है, वो फोल्डर बराबर नहीं पहचाना उसने। हाँ, बन गया, ठीक है। Please unshare it. So everybody is able to create successfully, and you know the option now. You have to run the commands from the terminal. All these Hadoop commands are to be implemented. तो जैसे अब कल को कोई प्रोग्राम भी रन करना हो ना, वो कमांड Hadoop से शुरू होगा। कोई प्रोग्राम को फायर करना हो Hadoop पे, कोई कमांड लाइन फाइल्स को अपलोड करना हो, for uploading we have a command called put command. But how will you get the files here? That is a problem. They have not given FTP. So what we'll do is use a fallocate command. We'll try to upload some, create some files here. Fallocate command पता है क्या किसी को? No sir. No sir. You can create files. Fallocate. Screen. हाँ, एक मिनट शेयर कर रहा हूँ भाई। So fallocate command, we can create files. Tomorrow we need that, huh? So here, what are we doing here? We are creating a fallocate file -L. L is the length, -L. और ये 1G क्या है? Size of the file. Size of file. So dummy file बनाती है Unix system. This fallocate, it can create some big file for you on your local system. So I'm showing you how to create this file. Fallocate -L 1 GB. Am I right? 1 GB ऐसे लिखा है ना? 1G नहीं, 1G है, sorry, 1 GB नहीं है, 1G and the file name. So file name, suppose I give file1 without any extension. If you do ls here, ls -L, देखो 1 GB का फाइल बन गया आपकी मशीन पे। लोकल में से। तो ये क्लाइंट पे बना ना? हाँ, क्लाइंट पे बना, बट ये 1 GB बना है कि नहीं बना है? देयर मस्ट बी सम इश्यूज हियर। मेरे हिसाब से 1 GB नहीं बना है, क्योंकि 1 GB इन्होंने मैक्सिमम लिमिट दे रखा है। सर ये फैलोकेट वाला वापस समझाना पूरा सर। बताता हूँ, एक मिनट रुको यार, ये 1 GB नहीं बना है, 1 GB नहीं बना है सर, बट इधर इन्होंने एक्सटेंशन दिया है ना फाइल के बाद में, इधर CIMG। वो तो कुछ भी दे सकते हो आप, यूनिक्स में तो एक्सटेंशन का कोई वैल्यू नहीं है। ओके ओके। यूनिक्स हैज नो वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन। So what is 107? Is it 1 GB or no? I don't know. It's 1 GB. So it's, I think, more than 1 GB. Yes, 1024। नहीं, ये वो बाइट्स है यार, Okay, that is bytes. बाइट्स हमेशा LS में बाइट्स आता है, कोई MB या GB में नहीं आएगा। So 107 So it's 1 gigabyte. Yes sir, it is a 1 374 1824 1824 divide by 1024 divide by 1024 and divide by 1024. हाँ, पूरा 1 GB एक्यूरेट, एग्जैक्ट 1 GB बना। 1 GB is how much? 1024 into 1024 into 1024 bytes.
Yes, sir. Yes, sir. So now this file, this is a dummy file ना, उसके अंदर आपको कुछ दिखेगा नहीं, some dummy data दिखेगा. If you try to open vi और head command run करते हैं, head file1, सर वो फाइल बनते वक्त परमिशन डिनाइड ऐसा आ रहा है मेरे को एरर फाइल लोकेट में. नहीं, आपने वो होम डायरेक्टरी से काम नहीं कर रहे हो, आपका टिल्ड साइन में होना चाहिए. दैट इज होम डायरेक्टरी. यू मस्ट बी इन रूट. यस सर, आई एम इन रूट. हाँ, रूट पे क्यों काम कर रहे हो? रूट थोड़ा अपना वर्किंग एरिया है. Our working area is not root. Our working area is PWD. See this home, big data, mind, whatever ID. If I work here, suppose if I work from your home directory, root directory, I cannot run any command here. This is not my work area. So I'll get errors. So it is better we move to home directory first. So come to your home directory and then run the fallocate command. Now what is fallocate command doing? Making a flat file of 1 GB. 1 GB. It's a dummy file you are creating because right now we can't import data because FTP tool is not given to us. Otherwise, I would have shared some file with you on Google Drive. You would have downloaded and you would have transferred it. Fallocate command is just to create a file of that size. So now when we upload this file, tell me how many blocks will be created. 8 blocks. So let's try to upload this file now on the Hadoop side. Hadoop fs -put file1, and I will give only CDAC. I will not give the complete path because complete path ki zarurat nahi hai. CDAC is in my home directory on Hadoop size system. So this file will be written under CDAC folder. If anybody is able to access the U, you can check in your U. So where will I see it? And wait, let it write first. In my case, it's still writing. Still writing. You can do ls command na under CDAC. You can see it under CDAC. सर मैं अभी रूट में हूँ, अभी होम के अंदर कैसे जाऊँ? Type only cd command. Hadoop access ls nonsense. and only it is type CDAC just to give the folder name after ls. कोई चैट में उसका वो fallocate का Saying लिखना found one item. चैट में क्या? वो वो fallocate वाला लिंक मतलब रिटर्न क्या लिखना है वो सर एक बार ट्राई करें. Allocate -l1g. Yes sir. File name. So it's showing one item, found one item. And that name is there, na file name, whatever. Yeah, file1 is there. The file is uploaded successfully. But for me, it is still taking time. I don't know. Maybe my system is crashed. Yes, it's showing on you also. CDAC So, and but file1. where do we check on you? There is a symbol of files next to database symbol. You'll get to see the CDAC and click on CDAC. You will see file1. If your U is working, you can see in U also. She's right. Yeah, I can. And can you see the CDAC के अंदर folder के अंदर you can see the file1. File1. Yes.
Yes, 1 GB दिख रहा है। इसमें से रीड और राइट ही हो सकता है, मेरा RW लिखा हुआ है। वो 3 यूजर होते हैं ना, यूजर, ग्रुप ओनर एंड अदर्स। अब तीनों में RW आ रहा है, एक में आ रहा है तीसरे में। हाँ, तो तीनों का मतलब पता है आपको क्या होता है? रीड राइट, यस सर। व्हाट इज फर्स्ट ग्रुप नेम? फर्स्ट ग्रुप वाले को क्या बोलते हैं? फर्स्ट जो 3 पार्ट होते हैं ना। हाँ, रीड राइट। अरे रीड राइट एग्जीक्यूट में 3 पार्ट होते हैं, लाइक दिस। एक तो आपको किसी को मतलब सिंगल ग्रुप ऐसे होता है, देखो ये होता है और ये 3 होते हैं। तो पहले वाले को क्या बोलते हैं, जो रीड राइट एग्जीक्यूट जिसको देते हैं? यूजर बोलते हैं खुद को। दूसरे वाले को ग्रुप ओनर, रूट को देते हैं, and तीसरा ग्रुप मेंबर, और तीसरा अदर्स, जो ग्रुप के बाहर है। वो राइट्स देते हैं अपन। तो यहाँ पे डिफॉल्ट राइट्स दिए गए हैं। These are all Linux commands. Just try to clear your doubts on these commands. मेरा तो लोड ही नहीं हो रहा यार, क्या हो रहा है? सर हाँ, लोड हो गया मेरा। Load हुआ file 1. I can see file 1 under CDAC folder. See here, everyone, 1 GB data. And if your Hue is working, can somebody share their screen with Hue? Yes. That we can see file 1 under Hue. जिस किसी का दिख रहा हो Hue में. So refresh. नहीं है इसमें। नहीं है। रिफ्रेश करो ना। Not that one. कौन सा रिफ्रेश करना है? नहीं, वो बराबर है, रिफ्रेश किया। होम पे भी क्लिक कर सकते थे आप। होम वर्ड जो लिखा है ना, होम नीचे, ओके, होम ये लिखा है ना यूजर के बारे में। हाँ, ये दिस इज आल्सो फॉर रिफ्रेशिंग। सीडैक दिखा है, देखो सीडैक पे क्लिक करो। फोल्डर आया ना सीडैक नीचे। हाँ, उसके अंदर फाइल 1 दिखेगा आपको। फाइल 1 अपलोड नहीं हुआ है आपका? ये तो हुआ था। किधर अपलोड किया आपने? सीडैक के अंदर नहीं किया। सीडैक में नहीं किया, कहीं और जगह कर दिया। अच्छा, उसने फैलोकेट फाइल 1 के बाद सीडैक नहीं लिखा। पुट नहीं किया सर उसमें। हाँ, पुट किधर किया आपने? आपने खाली लोकल मशीन पे फाइल बनाया है। पुट कमांड रन करो, hadoop fs -put। सब वो मैं आई एम नॉट गेटिंग इट, मतलब उसको क्या लिखना पड़ेगा? hadoop fs। hadoop fs। ठीक है। The put command is to write the data। जैसे हम लोगों ने सीखा ना आज राइट कैसे करते हैं, वो पुट कमांड से होता है। hadoop fs -l -put। Put is for writing। -put put यार, आउट नहीं, पुट स्पेस आपका ओरिजिनल फाइल नेम, फाइल 1 मतलब लोकल फाइल 1 स्पेस CDAC। CDAC is your destination. हाँ, enter। This will copy the file to the Hadoop system. Now you are using both NameNode and DataNode. पर वो खाली कॉपी कर रहा है ना? कॉपी नहीं कर रहा है, वो पूरा डेटा नोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना 8 ब्लॉक। पहले तो वो परमिशन लेगा नेम नोड से। तो इसके बाद क्या करना है? मतलब वो एम्प्टी फाइल राइट कर रहा है ना 8 नोड्स पे। एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर डेटा है, बट अगर एम्प्टी होता तो 0 बाइट दिखाता वो। पर वो लोकल में अवेलेबल रहेगा ना पुट करने के बाद? हाँ, लोकल में रहेगा। मूव नहीं कर रहे हैं हम लोग, पुट कर रहे हैं। फाइल 1 आ गया सर। फाइल 1 पे क्लिक करो, कुछ डेटा दिखेगा क्या? थोड़ा वो टाइम लगेगा बस,
It will show some binary form. अगर actual data होता तो दिखता. कुछ नहीं है सर, ब्लैंक। तो ये ऐसे कैसे फाइल बनती है, दिखता नहीं है बट साइज 1 GB दिखा रहा है, मतलब हाउ दिस पॉसिबल? ब्लैंक है सर फाइल पूरी। ब्लैंक नहीं है, उसके अंदर कुछ ब्लैंक मतलब कुछ ब्लैंक है तो 1 GB कैसे होगा यार? कुछ ना कुछ तो होगा तभी 1 GB होगा। या तो ब्लैंक स्पेस नहीं डाला होगा उन्होंने। हाँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना उधर। तो ब्लैंक क्यों, डेटा फाइल 0 बाइट नहीं है, फाइल इज 1 GB। यस, ये तो स्पेस डाला होगा 1 GB का, 1 कैरेक्टर 1 स्पेस। ओके, कुछ ऐसा लॉजिक होगा क्योंकि स्पेस डाला होगा इसलिए कोई दिखेगा नहीं। सो उसके बाद कैन वी टेक अ ब्रेक राइट नाउ? यस सर। यस सर, ब्रेक विल ट्राई टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स। यस सर। तो सर 9 o'clock आए या 8:50? 10 बजे नहीं है क्या? 10 बजे मिलते ना, बेस्ट है। टाटा करके चले जाएंगे एक दूसरे को। आपने कहा अनऑफिशियली 40 मिनट का काम है। तो 10 बजे आते हैं ना, बेस्ट है यार। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या बजा? 8:15 बजा है ना? हाँ यस सर। यस सर। 8:50 को मिलते हैं। ओके ओके सर। यस सर। ओके। Just sharing my screen. So we had uploaded 1 GB data on Hadoop, and let me check whether I can still access my view. Just tell Vinita ma'am your view is not working, huh? Vinita is there today right now? Yes, sir. Yes, sir. So your You is not working actually. okay, only for you or for everyone else also? No, I think so. It's for everyone. There's a delay. Okay, okay. So I'll check with them. And just tell them to add FTP. Okay. Because we are not able to upload any files. So we just now create some dummy files to check the distribution of data. So here we have uploaded 1 GB data. Now how can we see metadata? For that we have a command fsck. So we can give Hadoop fsck, and we have to give full path here. We cannot give relative path. So we have to give user, big data mind, (4385) CDAC /file1. And then you have to give certain options with this. What is the file status? So hyphen files, hyphen blocks, and hyphen locations. So we can come to know what is the status of the file. Is it healthy or it is bad? How many blocks this file would be creating? So we'll come to know right now with all the metadata information. And where are these blocks stored? Remember, we are using 3 replica. So every file, every block will be stored on 3 data nodes. So we can figure out from this command where exactly the blocks are located on which data node. So there it is. Let's see the output here. So when I run this command, I'm getting 8 blocks here. And all the 8 blocks are okay. So let's look at the first block, which is 0 serial number. And it has some details. So we'll study the first block. Can I copy this file on a notepad? So could you show the command once again? I will. Just give me a minute. It is Hadoop file system check command, Hadoop fsck. It's basically checking for your metadata. You have to give full path with fsck and 3 options: hyphen files, hyphen blocks, hyphen locations.
and you would be getting the details like 0, 1 till 7. So here you can make out the first block starts from 0 serial number, as I told you. Then it has a block pool ID name. This block pool ID is coming from the NameNode. So NameNode generates a block pool ID which is unique to NameNode. And you will note that all blocks are having the same ID. So because we have only one NameNode, they will have the common block pool ID. And what is here? This is my actual file name. See, blk_id. This is my file name. Till 63. हेलो ब्लॉक नेम है सर, ब्लॉक फाइल का जो नाम है वो नेम है, फाइल नेम या ब्लॉक नेम, जो भी आप बोलो. And this is the metadata file name. उसके साथ एक metadata भी बनता है, तो उसका फाइल नेम है, एक्सटेंशन है उसका. See the length of the file. This is equal to 128 MB. 134217728 bytes. So this is equal to 128 MB. If you divide by square of 1024, it is exactly come to 128 MB. And see the replica, 3 replicas. And which are the data nodes? 10.1.2.40. This is my first data node. Second data node is 10.1.2.209. And third is 10.1.194. See, 3 copies are created on 3 different machines in your cluster. So we have been able to create 3 separate copies on 3 different data nodes. So we are getting full details about metadata, the file name, the size of the file, that is 128 MB, how many replicas we have created, और हर replica कहाँ सेव हुआ है, कौन से machine पे, उसका IP address आपको मिलेगा यहाँ पे, because we have given locations. So if you don't give locations, you will not get that portion in the output. सर ये 3 replications में 8 ब्लॉक कैसे क्रिएट हुए? मतलब नहीं, 8 ब्लॉक्स तो 1 GB की वजह से क्रिएट हुए ना. 1 GB कितना होता है? 1024 MB डिवाइड बाय 128 MB करो तो 8 ब्लॉक्स बनेंगे ना, 8 फाइल्स बनेंगी. यस सर. हर फाइल का 3 रेप्लिका बना है. हर 8 GB का? हर जीबी का नहीं, हर ब्लॉक का, हर फाइल का. दिस इज वन फाइल. BLK 1076733363 एक फाइल है. दिस इज अ पार्ट फाइल क्रिएटेड. 1 GB का 8 फाइल बने हैं स्प्लिट होके. These are 8 separate files which are being created from one file. सर इसमें replicated files ये नहीं है क्या? वो अलग है ना, 3 है ना into 3. यस सर. पर उनका नाम तो एक ही रहेगा ना, सेम रहेगा ना. यस सर. ओके 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 सर. उनके नाम थोड़ा अलग अलग हो जाएंगे. अगर मैं आपका क्लोन बनाऊंगा तो आपका क्लोन का नाम भी वही रखना पड़ेगा मुझे. Am I right? क्या अलग नाम रखूंगा? So these are replicas of the same file. So we are creating 3 replicas क्योंकि अगर ये फाइल ब्लॉक मेरा, this is your metadata. If this one of the blocks get destroyed or the node gets stopped working, so I can read this same file from other nodes. 10.1.209 या 10.101.20194. Is it clear, everyone? 8 blocks and 3 replicas we have created out of 1 GB. So total number of files we have created 24. 24. So we are consuming 3 GB of space actually on the cluster. We are consuming 3 GB.
So every block will have a detail. So you can see start from 0 number. That is the first ID. Then 1, then 2, and so on. And last one will be 7. See here 7. Last one will be 7. And 7 will also have the same number. Because here the last file is not having a less data because it is exactly divisible. That is a reason we are not having less data in the last file. Is that clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So this is my file name, BLK107. You can see that I'm getting different file names, 670, 675. They're not in serial number. Huh? So one is 663, one is 670, 675, 683. So I might get different IDs. Remember. सर वो बीपी का फुल फॉर्म क्या है बताओ ना एक बार जरा. Block pool ID. Block pool ID. ID, हाँ. Block pool ID है. It is a NameNode ID actually. It's a NameNode ID. अगर मैं आपको कैसे दिखाऊं, अगर ब्राउजर होता तो मैं आपको दिखाता एक्चुअली वो. कैसे दिखाऊं? NameNode कहाँ पे रन कर रहा होगा? I'll show you from my personal machine. Single node cluster है मेरे पास installed. I'll show you from that what is block pool ID. Is this clear, everyone? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Now let us try to play with the replica factor. Now 3 है. Can we make it 4? So Yeah, tell me. You said every node वो 128 MB का एक block size बनता है ना? हाँ, फाइल बनेगा फाइल. हाँ फाइल. तो if you convert that वो 134 MB होता है मेगाबाइट. नहीं 134 डिवाइड करो ना, स्क्वायर ऑफ 1024 एग्जैक्टली 128 आएगा. क्या बात कर रहे हो? मैंने डिवाइड नहीं किया, मैंने कन्वर्ट करके देखा था. कन्वर्ट नहीं करना. 134217728 ये नंबर है ना? चेक करो. 17728. हाँ वही. डिवाइड करो 1024 से तो कितना आया? इतना केबी हुआ. हाँ. अभी डिवाइड करो अगेन 1024 से 128 MB आता है. एग्जैक्टली 128. हो ही नहीं सकता आपके ब्लॉक में एक भी एक्स्ट्रा बाइट चला जाए. इम्पॉसिबल. यू कैन नॉट हैव अ सिंगल एक्स्ट्रा बाइट. ये 29 कभी जिंदगी में नहीं होगा. 1 बाइट भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा उसमें. 28 है तो 28 मैक्सिमम है तो 28 मैक्सिमम रहेगा. हाँ स्मॉल छोटा हो सकता है अगर आपका टोटल फाइल साइज इक्वली डिविजिबल नहीं है. सपोज 200 MB है तो एक छोटा फाइल बन जाएगा. Okay. So let's create a small file 200 MB and then see the output. So allocate 200 M file 2 ls minus l. So file 2 मैंने 200 MB की बनाई है and upload the file now again. Hyphen put. This will create how many blocks? Tell me. 2 blocks. 2 blocks. 2 blocks. 2 blocks. So we'll now see there are only 2 lines, so we will not get mixed up.
But the second file will be much smaller. Huh? It will not be 128. It will be around 72 MB. So if I run the FSCK command now with file 2, I will get only 2 blocks. One of 128, this is maximum. और आपका जो second file बनेगा वो balance data का बनेगा 72 MB. You can see here everyone that I have created one more file of 200 MB. And one file is of 128 and another one is of 72 MB only. Now let's play with the block replica. Now we can go up to 5 replicas, right? In this cluster, am I right? Can we create 5 replica for every block? Yes, sir. Yes. Tell me Yes, sir. why. Answer is right. We have Why? five nodes. So we have 5 data nodes. We can't keep on the same data node, but we can keep on separate data nodes. So if I try to create 6 replica, then what happens? Then we'll try to look at it. So there's a command for changing the replica factor. Hadoop FS -set rep. Suppose if I give 6 and I give the file name CDAC file 1. So I'm giving the 6 replica to the first file, which is of 1 GB. So maximum 5 I can create, but what will happen to the 6th copy? Because I don't have 6 data nodes. So let's see what happens here. So I have set the replica 6, but just setting the replica 6 in the metadata is not going to create 6 replicas. आपके पास जगह भी होनी चाहिए. So let us now run FSCK command again on file 1. And you'll be getting an under replicated system, under replicated warning. See, I told you yesterday, right? You'll be getting a warning under replicated. सर ये ऐसा क्यों हुआ? मतलब क्योंकि आपके पास 5 डेटा नोड. So look at that slide. We have 5 data nodes, right? So we have 5 data nodes. Suppose I have got 8 blocks, B1, B2, B8. So अगर मैं B1 को 5 replica करता हूं तो I can store easily B1 on 5 nodes, right? Yes. अगर 6 करता हूं तो छठा किधर स्टोर सेव करूंगा? नोड तो है नहीं मेरे पास. तो रिक्वायरमेंट डिमांड 6 की है, but actually because of data node deficiency I am able to store only 5. तो under replicated हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So this is called under replicated. Your target is 6. See, look at the command. It says the target is 6 but found 5. क्योंकि आपके पास 5 डेटा नोड है मैक्सिमम, तो 5 ही रेप्लिका बना पाओगे ना, ज्यादा से ज्यादा 5 बनेगा. क्योंकि we cannot replicate on the same data node. That system will not allow. सर जब अपन डेटा नोड बोलते हैं और नोड बोलते हैं तो दोनों एक ही है ना? हाँ एक ही है. मैं मतलब मेरे लिए नोड और डेटा नोड में फर्क नहीं है. ओके सर. बिकॉज मैं नेम नोड को कभी नोड नहीं बोलूंगा, वो मास्टर नोड है मेरे लिए. तो मैं उसको हमेशा मास्टर नोड के हिसाब से बुलाऊंगा, अगर नेम नोड नहीं बुलाऊंगा. अगर कोई भी सिस्टम में अगर बोलता है ना, जैसे आपके पास ये 5 डेटा नोड है और एक नेम नोड है और एक सेकंड स्टैंड बाय नेम नोड है, तो दिस क्लस्टर इज हाउ मेनी नोड क्लस्टर? कैन यू टेल मी? 5. 5 के 7? 6, 7, 7. नहीं 5.
we only consider data nodes जहाँ पे एक्चुअल डेटा स्टोर होता है. नेम नोड तो अपने आप रहेगा ना, उसके बगैर तो गाड़ी नहीं चलेगी आपकी. ओके. नेम नोड और स्टैंड बाय नेम नोड तो रहेगा, उसके बगैर गाड़ी कैसे चलाओगे यार? वो तो मतलब क्लस्टर नहीं चलेगा आपका. एक्चुअल डेटा किधर स्टोर होता है? डेटा नोड में. सो these nodes are important. कोई भी अगर आपसे बात करेगा ना कितना नोड क्लस्टर है, तो आपको बोलने का एक्चुअली मेरे पास 5 नोड है, तो it's understood that you are talking about data nodes only. Okay. Because name node, data node, secondary name node, standby name node, there has to be there. Without that, how can you run the cluster? So अगर मैं node बोलता हूँ या data node बोलता हूँ, तो I am referring to data node only. Because that is what matters in cluster, जहाँ पर actual data store होता है. सर फिर ये जो नेम नोड और एसएनएन है, उनके लिए अलग से डेडिकेटेड ये होता है क्या मशीन? हाँ, these are all separate machine ना, ये 7 मशीन है. अभी आपको सुबह बताया ना, मतलब इवनिंग में कि 7 आईपी एड्रेस, हर मशीन का अलग आईपी एड्रेस बताया मैंने. हाँ हाँ. फिर उसका मतलब क्या हुआ? They are separate machines. Okay. All these machines are separate machines. Am I right, everyone? Yes, sir. Yes. We are not sharing any of the services. These are separate machines. Name node is separate. Standby name node is separate. Name node और standby name node तो separate होना ही चाहिए. अगर name node बैठ गया तो standby name node कैसे चलेगा आपका? Okay, sir. How can it be? How can they be same? They cannot be same, right? हाँ sir. अगर name node ही आपका बैठ गया, तो फिर second standby name node कैसे आप काम करोगे? They cannot be same. बिल्कुल sir. And data nodes are all separate. हाँ, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि दे कंबाइन नेम नोड एंड डेटा नोड. जैसे किसी को 4 नोड क्लस्टर बनाना है, तो एक ही नोड पे वो डेटा नोड और नेम नोड दोनों रन करेगा. बट दैट इज अ वेरी स्मॉल क्लस्टर. हाँ, टेल मी. सर, तो अभी मिसिंग नेम नोड्स इसमें 5 आने चाहिए ना? सॉरी, मिसिंग रेप्लिकास 5 नहीं आएंगे, 8 आएंगे ना. 8 कॉपी है ना, हर एक का मिस हो रहा है. 8 आएंगे, हर एक ब्लॉक का एक मिस हो रहा है. तो आप देखो मिसिंग 8 आएगा. हाँ 8 आ रहा है, वही मेरे को लगा 5 आना चाहिए. क्यों 5 क्यों आएगा? 8. अच्छा, 8 क्यों आ रहा है, 5 क्यों नहीं आना चाहिए? टेल मी. गुड. व्हाई 8 इज कमिंग, व्हाई नॉट 5? अरे लॉजिक है, मैथमेटिक्स सिंपल मैथमेटिक्स में लॉजिक किसमें सोचना क्या है? 8 ब्लॉक है ना, 8 फाइल है. 8 फाइल है, 8 फाइल का हर एक कॉपी मिसिंग है. सी लॉजिक क्या है? सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ में कोई बड़ा लॉजिक नहीं है. 8 ब्लॉक्स वी हैव, राइट? एंड व्हाट इज द टारगेट रेप्लिका? 6 RF. So what should be my total files, target files? 8. 48 ना यार. 8 into 6 48. 8 into 6 48 files. और एक्चुअली फाइल्स कितनी है मेरे पास? 40. So 8 are missing. 8 दिख रहा है आपको? हाँ. अगर इसको 7 कर दूंगा रेप्लिका को, तो क्या होगा? वहाँ पे फिर 16 files missing. 16 आएगा. 16 Because this will become 56. Yes, yes. Because आपका 40 से ज्यादा तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि 5 नोड है आपके पास. Let's try to change 7. See the difference. 16 हो जाएगा अभी आपको. So you can increase or decrease the replica as you want. There is no problem after loading your data. But if you can't create extra copy, then it will show as missing copies. And then you have to do something. You have to add hardware. You're getting 16C. Because now my target is 7 and found 5. I found 5, target is 7. Are you all getting this, everyone? Yes. Yes. Where are the missing? Missing दिखा आपको 16 नीचे? Missing replica 16.
सर 5 तो बना दी ना उसने फिर भी। नहीं 5 बना दी मतलब अपने पास 5 सर्वर्स थे, 5 हाँ तो नोड्स थे, 5 उसने बन गया 5 तो बना दिए। 7 में से 2 मिसिंग हो गया ना, तो 8 × 2 16। हाँ वही पूछ रहा हूँ, मतलब बनाए कि नहीं बनाए फिर उसने 5 से। 5 बनाए ना, सबके 5 के डेटा नोड्स है ना, आईपी एड्रेस यहाँ पे। ओके। रेप्लिका 5 लिखा है ना यहाँ पे, 5 तो बने ना, 5 जितना मैक्सिमम बन सकता था बनाया उसने। तो 5 का डेटा नोड का आईपी एड्रेस है ना 10.1.40 है, यस सर। बाद में 209 है, 194 है, 2103 है। 5 डेटा नोड का आईपी एड्रेस आ रहा है ना अलग अलग। यस सर। भाई हार्डवेयर तो नहीं क्रिएट कर सकता ना स्ट्रक्चर, मतलब सिस्टम। हार्डवेयर तो आपको लगाना पड़ेगा यूजर को। सर वो रेप्लिका चेंज करने के बाद कौन सा करना है, कमांड रन करने का है? एफएससी के रन करोगे तो आपको पूरा स्टेटस दिखाई देगा फाइल का, मेरे डेटा। Sir, या टेल मी। sir, I've changed my replication factor to 4, and in this average block replication, it is showing 3.2. Which number? Just I'll annotate, sir. Here. This one? Yes. Okay, let me show it to 4, make it 4. मेरे को 5 ही दिखा रहा। हाँ it's 5 only. No, it's still showing a replica 5. 4 नहीं हुआ वो। I'm getting 3.2. How come? No, you will be getting 3.2 is the right number, because 4 divided by 5 machine, no? So it must be something like that. Some calculation must be there. So, but why I'm not getting? I'm making it 4. So even I'm showing, even I'm getting 5. Yes, sir. पता नहीं डाउनग्रेड नहीं हो रहा है। 3 करके देखता हूँ एक मिनट। सर वो एक बार फाइल रेप्लिका 5 किया, फिर बाद में रेप्लिका 3 सेट किया, तो वो रिमेनिंग फाइल्स डिलीट हो जाएंगी? हाँ डिलीट। ओके। वो तो अपने आप डिलीट होंगे, वो एक्स्ट्रा क्यों बनेंगे? 3 किया तो भी सेम 5 ही। नहीं, कुछ प्रॉब्लम है सिस्टम में, एक्चुअली रिड्यूस होना चाहिए। मेरा 4 दिखा रहा है। अच्छा 4 किया तो 4 दे नहीं। यस सर, 4 किया तो 4 लाइव रेप्लिका 4 दिख रहा है कि 5 दिख रहा है यहाँ पे? वो देखो, दैट इज इम्पोर्टेंट। I'm getting live replica as 4, but that average block. हाँ 4 I got it. 4 you're replication. getting 4, Yeah. but you're getting average. This is 3.2, right? Yes. No, I'm getting like replica as 5 itself. This calculation must be 4 divided by 5. That will be what? 0.8. Yes. Now 5 divided by 4, that will be like average block replication 5. So but the live replica should also be 3 na, if my replication factor matlab if I No, change you it have to said 3. 4. If you change it to 3, it should become 3, but it is not happening right now in the system. I don't know, something is wrong. It's not happening. It's not happening here. Something is missing out. Maybe it's not rewriting the existing file. No, Yeah, I didn't upgrade. I didn't upscaled it. I like my first replication factor. I've set it to 4 only. Like you did first 5. He did it on a new file, na? He didn't do it on an already. Let's do it on a new file. File 2 I Sir, have now. file 2 should. File 2 I have now with 4. I can do it. I'll try on file 2. Let's try to do on file 2. So file 2 I'm getting 4 average block replication. So that is something different. That is your
some block replication in your system. That is nothing to do with this file. Okay. I don't think so. That is something to do with this file. So I can see now 4 replicas here. So now the live replica is 3. If I do it on a new file, it's working. But No, but can you downgrade? Can you downgrade once you increase? Can you decrease? No. Once I increase, that's not happening. But this is not right. You can decrease also. Maybe there's some property they have to modify. It is not allowing you to come down. Oh. That is a problem. So it's just going upwards, not downwards. See, now if I make it 4.3, it is not happening, but we can do it. I've seen in many other examples where we can reduce the replica. So it gets deleted. Maybe that delete option is not there. That is why it is not allowing to change the replica factor. Some of the properties they have hidden that property maybe. So let me show you on my system one important factor. It's a single node cluster. I've got one name node, one data node only. But what I can show you, there's a problem in this machine, did not started only. Let me start my machine again. Like yesterday, one of you was asking me that if I use a structured data, so certainly that structured data will be also split into 2 blocks. So right now on this cluster, I cannot show you because I will not have permission to enter into DataNode because they are using some AWS. I think so. This is working on AWS on cloud system. So that is the reason we are not able to reduce it. Maybe some restrictions are there. But on my personal machine, I can enter into a data node. So now it is showing 3.5 average block replication in my case. There's a problem. If I make it 3, one is 3, one is 4. Why? I don't know. Just check whether you're getting 5 is everywhere. Is 5 is there? I think so. Yes, that sir, is I'm getting both 5, but if I upgrade, I'm getting both 5. See, I understood what is the meaning of average. One file is replicated 4 times, one is replicated 3 times. So average is 3.5. Okay. That is the meaning of average. So it's nothing wrong here. But you can see that one file is replicated 4 times and one is 3. So they're taking an average of 4 and 3 divided by 2. 7 by 2 is 3.5. Now this is my browser. In my local system, I have a browser option which I can log on to a port number. I can connect to my data node, NameNode file system. So one way is that you can connect through a browser also. So you were asking me about block pool ID, right? This is the number which generates for every name node.
So whenever we start any cluster, we create a block pool ID for the name node. That number is recorded in the name node as a ID. And what is configured capacity? Configured capacity is the total capacity of your data node. It does not count name node capacity. And if you click on live nodes, I will get to know how many data nodes I've got. One. So it's a single node cluster. I've got these many files or blocks, around 2000 blocks in my cluster on my single machine, single data node. So this is normally for learning or demo purpose. And browse the file system. I can connect to my root of Hadoop, that is root. And user training is my home folder. So I'll be creating one folder CDAC here, just like we did in the previous example. So let me just increase the font. mkdir CDAC. So you can now find CDAC is being created in my home directory. So it's an empty folder. Now here I'll be uploading one CSV file. And let me show you the file data. It's a 40 MB file. Now you may ask me, how will I split 40 MB? Because 40 MB is less than 128. Yes. तो एक ही फाइल बनेगा ना? हाँ, बट मैंने क्या किया, मैंने ब्लॉक साइज अपना चेंज कर दिया सिस्टम में, 27 MB कर दिया. So पेज को 27 और 27 and 13. हाँ, मैं 40 MB को स्प्लिट तो कर नहीं सकता, फिर मैं कैसे करूँ? तो मैंने ब्लॉक साइज जाके चेंज कर दिया सिस्टम में. सो स्प्लिट नहीं कर पा रहे तो ब्लॉक साइज चेंज करना पड़ता है क्या हर बार? नहीं, वो आपको खाली दिखाने के लिए कर रहा हूँ. अच्छा. स्प्लिट मतलब आप छोटी फाइल को प्रोसेस करके क्या मतलब है, 128 के नीचे है तो दैट विल टेक लेस टाइम, और अपने वो कम समय लेगा. उसको स्प्लिट करके क्या मतलब है? हाँ. अगर कोई फाइल 50 MB की तो ऑटोमेटिक कम टाइम लेगा वो. So this is my New York stock market data. You can see it is like a structured data only. It has exchange name, stock ID. It has a date field. जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसका ऑल द प्राइस मूवमेंट, ओपनिंग प्राइस, इंट्राडे हाई, इंट्राडे लो, क्लोजिंग, वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ उस दिन, हाउ मच वॉल्यूम वर ट्रेडेड, एंड व्हाट इज द adjustment closing price. So this file is around 40 MB and my block size is currently 27 MB. Okay, how I've changed it I'll tell you later. First I'll show you that how the file looks after uploading, because I can show you only on my machine. I cannot show on the cloud because I don't have control to enter into their data nodes. So when I upload this 40 MB file, it will get split into 27 and 13. और जो भी balance है, 13 point something या 12 point something जो भी balance है, it will create another file. 2 files will be created. So let's run the put command from my local machine to Hadoop. It's a single node cluster ना, सब मेरे machine पे काम कर रहा है. Name node, data node, all services are running on my machine only. So Hadoop fs -put nyc.csv and CDAC. So here we have uploaded the file and let's go and check the file in the browser. Browser मेरा Hue का काम कर रहा है जरा. You can see here the size of the file is 39 MB. And block size is 27 MB. And मैंने replication factor भी 1 कर दिया, modify कर दिया, because एक ही node है. अगर मैं 3 रखूंगा तो under replicated हो जाएगा हमेशा. Every time under replicate करके कोई मतलब नहीं. So I have modified 2 properties in my configuration file. I've changed my replication factor and I've changed my block size.
So let's see the FSCK command. सर ये चेक कहाँ पे कर रहे हो? चेक मतलब सेंटोस पे है क्या ये इसकी? हाँ ये सेंटोस के मतलब यूनिक सिस्टम पे है। सर ये सिंगल नोड क्लस्टर है तो एक ही रेप्लिकेशन होगा, एक ही नोड होगा एक ही नोड है, एक ही डेटा नोड है, तो इसलिए फिर मैंने रेप्लिकेशन फैक्टर 1 कर दिया, चेंज कर दिया। अगर 3 करूंगा तो अंडर रेप्लिकेट दिखाएगा ना। यस यस सर, बार बार अंडर रेप्लिकेट दिखाएगा। So let's run the FSCK command on this file. So Hadoop FSCK /user training. ट्रेनिंग मेरा यूजर नेम है तो उसका होम डायरेक्टरी बना है CDAC and nyc.csv -files -blocks -locations. Okay, so you can see now there are 2 files created. पहले फाइल का नाम है blk blah blah blah, इतना बड़ा ID है. This is my first file name and this is my second file name. पहले का लेंथ है 27 MB, सेकेंड इज बैलेंस डेटा और एक एक रेप्लिका है. कॉमन मशीन वही लोकल मशीन का IP है 127.0.0.1. फाइन, till here everything is clear? Yes, sir. Yes, sir. Now we have to see both these files. Now both these files are written on a data node, on my data node, but in a proper DFS path. It cannot be written anywhere. So even the DFS path is a part of your metadata, or sorry, your configuration settings. Now let me talk about configuration settings also. There are 2 types of files. One is default file. Just give me a minute. So here we are going to see the guys, just give me a minute. So there are 2 types of file. One is your HDFS default file, where all your XML properties, default properties are written. Now this file is not visible in the system. It is hidden and it is read only. So you can say hidden and read only. But we can find out these files on system, on internet. All of you go to your internet site, Chrome, and type HDFS default XML. Please type this file HDFS default XML. And click on the first option. You'll find many properties: name, value, and description. And if you find all these properties are helping you to run your system. And there is one property called dfs.replication. If you come down, see here. And the default value is 3. And default block size, DFS block size is 134217728. So that is the reason we are getting the default values from this file, XML file, default XML file. So whatever properties we are using, this file is helping us to run the system, Hadoop file system. Now this file cannot be edited. You can't change the details in this file. So how did I change my file settings? How did I make it 1 and 27 MB? For that, I have got a site file in my system, and that I can easily modify.
Modify means it's an empty file initially. If you add a property, so that value will be overridden. तो जो भी आपका default में value है, it will be overridden by the site file. So we'll go to a place where my site files are available. User lib Hadoop, etc Hadoop. सर यूजर का स्पेलिंग देखिए. नहीं वो बराबर USR है वो. It's USR. ये यूनिक्स में USR भी होता है एक फोल्डर. सर ये जो आप रन कर रहे हो अभी, ये अपने खुद के लैपटॉप के मेमोरी पे रन कर रहे हो? हाँ ये मेरा पर्सनल वो है VM है. अगर आपको चाहिए मैं दे दूंगा. You can install it. It's a personal. सर एक डेटा जो डेटा नोड है सेंटोस पे Hadoop एक है ना? हाँ सेंटोस पे उस पे पूरा Hadoop इंस्टॉल किया है. अच्छा अच्छा हम भी कर सकते हैं. एक Ubuntu का भी है. Ubuntu का भी है मेरे पास. वो भी शेयर कर सकता हूँ आपको. Ubuntu का बेटर है इससे. ओके सर. उसके ऊपर सब है. स्पार्क वर्क सब है. स्पार्क HBase सब है. हाँ. But that is also single node. Good for practice. Okay. You can practice because वो lab आपके साथ lifelong रहेगा. कभी उसको मतलब you can keep on practicing till you want to. सर ये एक डेटा नोड जो है आपका मेमोरी लोकल मेमोरी है ना, एक डेटा नोड जो एक डेटा नोड आई एम यूजिंग इट विद माय रैम ना, मैं मतलब वो शेयर कर रहा हूँ मैं विंडोज और इसमें शेयर कर रहा हूँ. या somebody some lady was saying something. Hello. Yes, while creating second file, I'm getting error as no space left on device. While creating second file. Maybe that your limit is exceeded. I don't know. So you delete the first file. Use RM command. Delete the first file or make it a smaller file. Okay. Because everyone has used today 1 GB now, so like we are 60 people, so 60 GB to occupy ho gaya already. I don't know how much space we can use. Sir, .csv extensions are mandatory. No, not compulsory. वो तो file name मैंने कहीं से import किया है ना मेरा database से. So I've imported that file. So I'm using the file as it is. But let me show you the site file जहाँ पे मैंने property change किया है. See here, if you look at these properties here, I start with the configuration tag and I add a property. See, तो मैंने अपना DFS replication को 1 declare किया है यहाँ पे and DFS block size को 27 M means MB. या तो मैं bytes में number दे सकता हूँ या फिर I can use suffix value like MG whatever. सर HTML कोड है? हाँ HTML, ये पूरा HTML कोड होता है. सर सपोज नोड इंक्रीज करना है तो हमें अभी तो कैसे एक ही नोड मिला है ना? नहीं इसमें नोड इंक्रीज नहीं कर सकते. फिजिकल नोड चाहिए ना यार. वर्चुअल ये मेरा वर्चुअल मशीन है. ये वर्चुअल मशीन है तो मुझे 2 वर्चुअल सेटअप खड़ा करना पड़ेगा. मतलब 2 वर्चुअल मशीन सेटअप करके बाद में उनका कॉन्फ़िगरेशन करके वो बहुत लंबा काम है. Now there is one more property, dfs.datanode.data.dir. ये एक्चुअली DFS पाथ है डेटानोड का जहां पर सारे ब्लॉक्स स्टोर होते हैं. सो जो भी आप पाथ दोगे ना यहाँ पे उसी फोल्डर में जाके वो ब्लॉक्स लिखे जाएंगे, स्टोर होंगे, या जो भी फाइल्स आप बना रहे हो स्प्लिट करके. अगर आपने को ये दोनों फाइल देखनी है अभी BLK फाइल्स, we have to visit this site, this location, var lib blah 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 till data folder, and then we can see both these files, BLK files, and then we can open these files by using gedit or nano or vi karke, and we can see how these files are physically being split internally, how they are stored internally. So let's visit this folder now. Var lib Hadoop HDFS path. So cd var lib Hadoop HDFS cache DFS cd data.
So here it's saying permission denied. So basically it's restricting ourselves. Since it's on my personal machine, I can change it to my root user, sudo su. So now I have changed it to switch over to root user. From training, I have switched to root user. And I can enter into data folder. Inside data, you'll find current folder. So there are many folders inside. You'll find one block pool ID folder. Then again a current folder, finalized. And see, there are so many blocks written. Every block will have a .meta file, जिसका metadata लिखा होगा. Now I have got 2,600 files with me in my cluster. So I cannot go to search every directory, subdirectory. So I will do a find command on this file. Let's find out the file, where exactly that file is. So it is in subdir5 actually. See, अगर मैं ढूंढने बैठता तो पता नहीं, it would have taken ages. So cd subdir5. So there is also so many files. See, if I do ls minus l, so this file is there. And it is just now created 18th May. You can see the date also. And the size is 27 MB. So this is a proper file, like a proper Unix file. It is being created where? On the DataNode. Is this clear, everyone? Yes, sir. So we are writing this file to a particular DataNode as a file, proper file. Though we can call it as a block, but this is a normal file. Now let's try to open this file. I can use gedit mode to open the file in a text editor. And you know all these commands. NYC is a stop, exchange name, stock ID, date, price movement. All these values are there. And let me show you the last line. सर ये फाइल आपके लोकल सिस्टम पे थी क्या? हाँ मेरे पास थी, मैंने अपलोड करी ना अभी. आधा डेटा है. पर सर मेरे सिस्टम पे नहीं हो रहा सर वो. NYC फाइल आपके पास कहाँ से आएगी? नहीं सर, वो मेरे पास अलग फाइल है CSV दूसरी, वो फाइल अपलोड नहीं हो रही हो. कैसे अपलोड करोगे? आपको पहले वो VM पे अपलोड करना पड़ेगा ना, वो उसका FTP नहीं है अपने पास. I have requested for FTP. मेरा ये विंडोज पे नहीं थी, मेरी ये VM पे थी, क्लाइंट मशीन पे थी ऑलरेडी. विंडोज की फाइल मैंने यहाँ पे लाने के लिए मुझे WinSCP लगेगा. आई नीड सम FTP टूल. So I have requested FTP tool now, ma'am. Yes, Without FTP, we will not be able to work tomorrow, because I will not be able. Maybe that's why we use FileLocate. Otherwise, I would have shared with the files with you. And we would have uploaded those files. So you can see that one record is half. और ये आधा record किधर गया है? Next block में. हाँ, next block. So next block किधर है? फाइनलाइज में जाके देखते हैं. 43 में गया वो, सब DR 43 and see 12 MB. See next block का balance data next block में गया. So this is what we called physical split. It is not going to check your data कि आपका data complete है, incomplete है. No, nothing like that. It's a physical split. Exact 27 matlab exact 27, not even a single extra byte. 128 means exact 128. If your block size is 128, it will not take even a single extra byte. After your जैसे 127 MB touches, it's going to pass on the balance data to the next block. So फिर compute करते time वो missing data नहीं पकड़ता. हाँ, that is a logical question, but that is handled by Yarn and MapReduce. HDFS ने अपना काम कर दिया. HDFS वो नहीं देखेगा आपका फाइल बराबर स्प्लिट हुआ है नहीं हुआ है, लॉजिकल स्प्लिट हुआ है. That is not HDFS problem.
HDFS का काम यहाँ पे खत्म होता है, फाइल स्प्लिट करके इसको अपलोड करना डेटा नोड्स पे विथ रेप्लिकास। अब प्रोसेस करना है आपको, हाँ यू आर राइट, यू कैन नॉट प्रोसेस दिस फाइल एज इट इज, इट will give you error, but that it is to be handled by yarn and MapReduce, not by HDFS. वो yarn and MapReduce का काम है, कैसे इसको हैंडल करना है। So ultimately what will happen, this physical split needs to be converted into logical split while processing. अगर ये logically split नहीं होगा, you cannot process the data. So are you all clear now that how the files are getting split? Yes, sir. It is a pure physical split, nothing more than that. Yes, and that is the reason you can upload any type of data on Hadoop. Right? I told you yesterday, day before yesterday also in the demo class that you can upload any type of data on Hadoop. It can be image file, video file, structured data, unstructured data, semi-structured data, any type, because you're not looking at the data content, you're looking just the size of the file. And depending upon the block size, you are splitting the data and creating multiple blocks or multiple files. Now I have a question for all of you. So you see these two file names, right? BLK blah, blah, blah. And there is one file nyc.csv in the name node. So tell me, is nyc.csv is a real file or is a reference file name? Real file. Real file. nyc.csv. अगर nyc.csv रियल है तो ये क्या है? BLK फाइल्स। सर Hadoop के रेफरेंस में nyc.csv is a reference file और उसके लिए रियल फाइल ये BLK वाले रहेंगे। हाँ, nyc.csv पूरे क्लस्टर में आपको मिलेगा ही नहीं, कहीं ढूंढने जाओगे तो। अगर आप फाइंड करोगे ना DataNodes पे, आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो तो यूजर के लिए रेफरेंस रखा गया है वहां पे। यूजर को थोड़ा ये नाम याद रहेंगे BLK फाइल्स, और यूजर को तो खाली ये नाम याद रहेगा nyc.csv मैंने अपलोड किया था, और कभी भी मुझे कोई प्रोग्राम रन करना है तो मैं ये नाम लूंगा। There is no such file by this name. वो फाइल ऑलरेडी स्प्लिट होके दो फाइल बन चुकी हैं आपके सिस्टम में। There are two files being created on two separate data nodes as BLK files. These are the actual files actually. These are the actual files. These two files are actual files. And your NYC file, which is on NameNode, it is just a reference for the user to remember. उसका मेटाडेटा बनता है ना, इसका मेटाडेटा बनता है NameNode पे। So अगर आपको कभी NYC इसको एक्सेस करना है तो उसका मेटाडेटा है NameNode पे, उसका मेटाडेटा ये दोनों फाइल्स हैं, उसके लोकेशन है। Then we go to that node to process the data on that whichever node पे जहां पे ये दोनों फाइल स्टोर हैं। Is it clear? Please make this point very, very clear. There is no such file by the name of nyc.csv in the entire system. आप पूरा नेम नोड डेटा नोड पे फाइंड करोगे ना, आपको ये फाइल कहीं नहीं मिलेगी। It is just a reference name, that's it. उसका मेटाडेटा में आपको ये फाइल के नाम मिलेंगे दोनों। तो इसका मेटाडेटा में जाओगे तो आपको दोनों नाम मिलेंगे, BLK 161, और उसका IP एड्रेस मिलेगा आपको, कौन से IP एड्रेस पे स्टोर है। BLK 700, उसका IP एड्रेस मिलेगा, कौन से IP एड्रेस पे वो स्टोर है। तो ये दोनों फाइल एक्चुअल फाइल है जो nyc.csv को रिप्रेजेंट कर रही है एक्चुअली। These are the actual files. Because once you split the data, actual file is just a reference name on the name node. And user will always remember this main file name. User will not remember all these file names. How does user know what are BLK files? That is system driven.
So from this main file, we come to know the metadata, and from metadata we access those files. That is why I told you metadata is more important. अगर metadata आपका crash हो जाएगा, then you will never come to know where are your blocks stored. That is why I told you metadata is very important link between your actual data and the reference data file. If the metadata crashes, then you can't do anything. All your data is gone. You cannot go to every node and search every block. और उसको combine कैसे, merge कैसे करोगे? How will you know which file is or which part? That is next to impossible. Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. कोई question है तो पूछिए. Anyone has any questions? So nyc.csv is just a reference on the name node as a metadata part of information. Whenever we want to access that file, we can give the name, and that file will give the block details to the process. And these two files will get processed by your yarn and MapReduce. Hello, sir. Yeah, tell me. Sir, now this is a structured data, so we can easily see how this is split. But there is a data in video format or image format. हाँ, वो भी size पे split होगा ना. That is also get split on size. Okay, but how we can see? वो मैं नहीं दिखा सकता. जब भी तो मैंने आपको structured data का example लिया. How can I show you unstructured data example? Okay, okay. तो मैं structured unstructured का example लेता हूँ because I can make you understand this logic. That's why I've taken this example. Okay, okay. अगर मैं कोई unstructured data लूंगा तो उसमें आपको example समझ में नहीं आएगा कैसे split हुआ है. Since this data is structured, you can understand. You can relate with this data. Why the data is not, last line is not complete. Okay. But कोई भी data लोगे, it will happen the same way. Physical split. So suppose that video करना है तो video कैसा होगा मतलब? ऐसे ही होगा ना size पे. आपने 100 GB का वीडियो लिया suppose. हाँ. Divide by 128 MB. उसके भी आपके बन जाएंगे कुछ 800 फाइल बन जाएंगी. But sir, वो दिखेगा कैसे मतलब? दिखेगा नहीं, वो प्रोसेस एक साथ होगा डिस्ट्रीब्यूटेड. दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. आप देख पहली बात तो ये डेटा आपको रियल टाइम में कोई दिखा भी नहीं सकता जो मैं आज दिखा रहा हूँ. ओके ओके. ये कोई दिखा भी नहीं सकता क्योंकि ये आपको कोई भी एक्सेस नहीं देगा डेटा नोड पे. दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज आई एम यूजिंग माय ओन सिंगल नोड क्लस्टर. अभी मैं क्लाउड पे किसी को बोलूंगा कि मैं डेटा नोड पे कोई भी नहीं देगा एक्सेस. AWS वाला क्यों नहीं देगा एक्सेस? नहीं देगा वो. But video file will be in a binary format. अगर आप मुझे डेटा फॉर्मेट की पूछ रहे हैं, it is a binary format. हाँ. It is a binary format. You can upload a data file here on a single node cluster, और आप इसको अपलोड करके देख सकते हो. Means वो सर 1010 फॉर्मेट होगी ना? नहीं, I think so. It's binary. पूरा वो binary होगा. वो सब Greek characters. blah blah. वो जो समझ में नहीं आता ना वो वाले characters. इमेज का मैंने एक बार देखा था ओपन करके. वो पूरा एकदम बाइनरी डेटा रहता है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता. मतलब समझ में नहीं आता. दिखाई सब देता है, समझ में नहीं आता. हेलो सर, मेरा फाइल ही डिलीट नहीं हो रहा. RM करके नहीं हो रहा है. शेयर स्क्रीन. शेयर करो. Run the RM command. Hadoop पे रन कर रहे हो ना आप? हाँ तो ठीक है ना. डिलीट हो गया जब भी तो नहीं दिख रहा है ना आपको. डिलीट हो गया, बार बार क्यों डिलीट करोगे? नो सच फाइल आ रहा है. CDAC के अंदर है ना फाइल. अरे वो लोकल मशीन पे है यार. लोकल मशीन पे. और आपका RM CDAC करो ना. CDAC फाइल 1 करो. फाइल 1. बात बराबर दो अपना. ये फाइल दो जगह है. एक आपके लोकल मशीन पे भी है और Hadoop पे भी है. फाइल 1. तो डिलीट हो चुका है. अब LS करो. LS विद CDAC.
Hadoop FS -ls with CDAC, नहीं Hadoop FS -ls करके Hadoop FS -ls खाली स्पेस CDAC, ओनली CDAC, एंटर। नहीं डिलीट हो गया वो, डिलीट हो गया। अभी लोकल पे है आपका, लोकल पे ls करोगे ना दिखेगा, लोकल का थोड़ा डिलीट होगा, लोकल के लिए आपको rm रन करना पड़ेगा। ls करो, खाली ls है ना फाइल 1 यहाँ पे, तो rm फाइल 1 करो, डिलीट हो जाएगा लोकल पे फाइल 1। हाँ एंटर हो गया, ls करो, गया, डिलीट हो गया। yes तो लोकल का तो वही कमांड है जो आप लोग यूनिक्स में करते हो, rm cat। बट हडूप पे कोई भी डिलीट करना है तो हडूप fs हाइफन और वही कमांड, सेम कमांड rm। सर वो तुम्हारे यू पे भी रिफ्लेक्ट होता है क्या फिर बाद में? किधर यू पे मतलब? हाँ वो यू तो उसका वो वहीं से उठाता है ना। हाँ वहाँ पे ट्रैश फोल्डर बन गया है उधर। यू तो एक्चुअली एक थर्ड पार्टी टूल है, वो तो जो भी नेम नोड में होएगा वो दिखाएगा आपको। यू इज नॉट योर एक्चुअल क्लस्टर, यू इज जस्ट अ टूल, इट्स जस्ट अ सर्विस व्हिच इज पिकिंग अप डेटा फ्रॉम योर नेम नोड। सर वो अभी तुम्हारे इस पे जो कर रहे थे तुम CentOS पे, हाँ तो तुम कल बोले वैसा डेटा नोड से बात कर रहे थे, ऐसा था कैसे? मीन्स वो तुमने डेटा जो दिखाया अभी, मैंने डेटा नोड पे के अंदर जाके आपको डेटा दिखाया। वही ना, वो हम इस पे नहीं कर सकते ना। हम ऐसे कैसे करेंगे वहां पे, वो आपको AWS वाला है या वो परमिशन परमिशन ही नहीं। नहीं, वही हाँ वही वो देगा ही नहीं आपको अपने डेटा नोड में एंटर करने के लिए। कल को आपके उसके कोई भी डिलीट फाइल कर दिया तो आपने हु इज गोइंग टू बी रिस्पांसिबल। ओके। आपने अगर आपने एडिट भी कर दिया ना, उसको एडिट करके चेंज कर दिया ना, तो फाइल करप्ट हो जाएगी। सपोज मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया और सेव कर दिया इस फाइल को, ये पूरी NYC फाइल करप्ट हो जाएगी। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। ओके सर। एक मिनट में शेयर कर रहा हूँ, होल्ड करिए। अगर मैंने कोई भी चेंजेस किया ना ये फाइल में, BL के फाइल में, और सेव कर दिया बाय मिस्टेक, तो फाइल करप्ट हो गई। सो वो डिलीट करने के बाद डॉट ट्रस्ट फाइल ऐसे कुछ क्रिएट होता है क्या उधर? हाँ उधर होता होगा वो क्लस्टर AWS में। वो ट्रैश में जाके डिलीट कर दो, फॉरएवर डिलीट हो जाएगा। वो टेम्परेरी स्टोर होता है ताकि यू कैन रिकवर योर डेटा। बाय मिस्टेक किसी ने डिलीट कर दिया मारे करो। तो वो डिलीट रिकवर हो जाता है। Is that clear, everyone? Yes, sir. So we'll take it tomorrow then. Sir, I have a question. हाँ बोले। Now we are open Hue and another application. How we can close this? Normally we आगे are. क्रॉस बटन है, क्रॉस पे दबाओ, खत्म, फिनिश। Okay. और वहाँ पे का नहीं सर्वर स्टॉप कर देना, जैसे नहीं तो बिलिंग चलता रहेगा। That's why I'm asking this question, because on AWS we can terminate the instances. नहीं किसी का नुकसान क्यों करना है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे फैकल्टी है ना, यहाँ साइन आउट करो। Okay. और साइन आउट करने के बाद देयर इज अ, नहीं साइन आउट से पहले We open Hue and. Sir, they said that only while using Jupyter वो kernel बंद करना है, but while using anything else just sign out कर दो, वो हो जाता है। That's what the sir said. सर बस जुपिटर नोटबुक के केस में उन्होंने नहीं यहाँ पे है ना ऑप्शन क्लोज का, एक मिनट रुको, नहीं होता है यहाँ पे यार, एक ऑप्शन था साइन स्टॉप करने का, स्टॉप ऑप्शन दिया नहीं है, पहले स्टॉप ऑप्शन देते थे लोग, स्टॉप ऑप्शन देता था। बट आपको पूरा एक्सपायरी है ना, एक्चुअली पूरा पैकेज है ये। Yes, we have got only 1 month access. Sir. On the right That's side why. there is option. हाँ तो उसके बाद आप लोग अपने, मेरा एक मैं VM शेयर करूंगा, 7 GB का VM है। Okay. वो आप लोग डाल देना उसमें, उबुंटू बेस्ड है, CentOS से अच्छा है वो, उसमें सब पैकेजेस है, स्पार्क HBase सब कुछ है। सर कितने टाइम के लिए उसका एक्सेस रहेगा? मेरे वाला का तो लाइफ लॉन्ग रहेगा, वो तो मैं तो जब आपको दूंगा तो वो तो यू कैन यूज इट लाइफ लॉन्ग।
You can practice also after your this VM gets over. यस सर हमारे पास उबंटू है सबके पास उबंटू सेंटर्स है हाँ बट मैं जो आपको दूंगा वो उबुंटू के साथ दूंगा ना पूरा उबुंटू पैकेज है उसमें इंस्टॉलर सब ये हो Okay, sir. अगर if you want to install Hadoop on Ubuntu I can guide you that you can do it after the class. Yeah, and it will helpful for practice. Yes, sir. I will guide you how to create a Hadoop single node cluster on your Ubuntu machines. You have Ubuntu with you, right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ how to because मैंने फर्स्ट टाइम Hadoop सीखा था आज से 8 साल पहले मेरे को 6 महीने लगे थे Hadoop इंस्टॉल करने को अभी आप 5 मिनट में इंस्टॉल कर सकते हो. In those days there was no training. So I have to learn everything on internet on my own. Sir. Yeah, tell me. आज जो भी सिखाया उसको पढ़ना हो तो कोई रिसोर्सेज शेयर कर सकता है? Yes, sir. PPT नहीं मैं आपको बुक देता हूँ ना कल बुक देता हूँ. Okay. या फिर आप डाउनलोड कर लो. That is the best option. Hadoop guide. Definitive guide rather. By Tom White. ये खरीदना मत ये डाउनलोड पीपीटी पीडीएफ फॉर्मेट में होता है. तो आज का जो भी है इसमें मिल जाएगा. इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको. ओके सर. 700 पेज का बुक है. इमेजिन. किसने शेयर किया क्या अभी? विशाल ने. 4th एडिशन शेयर किया इसमें. हाँ 4th ही है वो. ओके सर. 4th इज लाइक अ बाइबल. ये मतलब बाइबल का काम करती है. ओके. Definitive guide 4th edition. You can download this PDF. 700 पेज का है. 800 पेज है 700 भी नहीं है. 2015 में लिखी है. It's the best book in Hadoop. It has all the features, all the topics. In fact, it has more topics than what we are covering in the courseware. और जितने भी PPTs है ना वो इसी बुक से उठाए गए हैं. So this book is like a Bible. Okay, everyone. Anything else? No, sir. No. See you tomorrow. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Thank you.